टाइप कर ले ये जो काम है ना, ये काम है, इतना तो पता है कि आ जाएगा, ठीक है। बस ये है कि वो कुछ दिक्कत हो रहा था, मुझे इतना श्योरिटी है कि आ जाएगा। Hello ladies and gentlemen, am I audible, visible? हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, वेलकम एवरीवन। आ गए हमारे शेर वापस, क्या बात है। सब लोग आ गए हैं। थोड़ा सा एक बार देख लें if everything is going fine, then we can start the class. हेलो राम जी, हेलो जी, विक्की जी, लव जी, माही जी, देवेंद्र जी, सब लोग आ गए हैं। थोड़ा सा स्ट्रीम एक बार डिले चल रहा है मेरा को कम। ये वाला माल है ना, कौन से कंपनी का? चलो यार, कल थोड़ा सा हो गया था ऊपर नीचे, but anyhow we'll cover it up today. Nicely we'll cover it up, don't worry. So my dear friends, we are right here with each other. हम सब लोग एक दूसरे के साथ में हैं और अच्छा करेंगे। हाँ जी, चलो। Good evening, very good evening to all of you right there who are there with me. So let's start with the FMT. Hope everyone knows that we have to join right here for the class, है ना? चलो जी, let's watch the class. And ये भी हो गया sort. थोड़ा सा मेरे को chat का option. Okay, so guys, let's start the class without any delay. So yesterday, where were we? We were right at the torture method when the light just went away. Okay, so we were there. So first we will talk about the torture method. From torture method only we are going to do, sir. Just give me thumbs up if everything is fine from my side and your side, and then we are going to start from the torture method only. Are we going to start from the torture method? Yes. If it is yes, just let me know. Hello. There's a delay in the chat. I'm feeling that. No worries. We'll do it. Okay, sir. हाँ जी, चलो ठीक है. Okay, so let's talk about the last topic. Yep, that is all about the torture method. So if we talk the torture method, we talk about the telephone कहाँ पे लगाया जाता है? Telephone कान पे लगाया जाता है. So beating ear is called as telephono. Beating ear is called as what, sir? Telephono. Beating ear is called as telephono. Now falanga से याद कराया था. Falanga is lafanga. और लफंगे ने क्या करा दी? बेइज्जती करा दी. तो फलंगा और बेस्टिनाडो बीटिंग द सोल्स. फलंगा और बेस्टिनाडो इज व्हाट, सर? Beating the soul. Dandana dan. Then coming to the dry submarine, plastic bag on the face is what, sir? Your dry submarine. Very good, everyone is participating. बहुत बढ़िया, thank you so much, Dr. Sarup. चलो जी. Wet submarine is head underwater. You can see very well right here, sir. Wet submarine is underwater. Then coming to the parrots free, hanging on the rod or pole like this. Hanging on to the rod or pole like this, where you are tied on the rod. Guys, remember, this is something called as parrot's breech. Next is sawhorse. You can see लकड़ी की काठी, लकड़ी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा. One leg here, one leg there, and centerpiece is just on a tip of triangular surface. See how painful the condition would be, है ना? So next thing is what's your black slave. Insertion of hot metal into the anus of victim. विक्टिम के एनएस के अंदर आपने गरम रॉड डाल दी. सो गरम चाहत ते डुल गई. ठीक है, चलो. प्लैंकटन, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, खड़े रहोगे प्लांट्स की तरह, तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग इज देयर. गोटना इज रोलिंग अ हैवी वुडन लॉग ओवर द लेग्स, माय डियर फ्रेंड्स. So first of all, I'll ask you a question. You just let me know, sir. Sir, this is called as
MCQ should be there in the exam and you have to answer in the chat box. I am waiting for you guys, dear friends. ठीक है? चलो फटाफट चलो जी फटाफट आंसर करेंगे सर चैट बॉक्स में सबके सब लोग. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. अच्छे बच्चे सबके सब यहाँ पे आंसर करेंगे. सो व्हाट इज द आंसर राइट हियर सर? यस, फोन में थप्पड़ मारा. टेलीफोनो सर. बीटिंग द सोल्स इज कॉल्ड एस. Beating the soul is called as. Yes. Beating the soul is called as what, sir? Beating the soul is called as. Beating soul is called as. Yes. Beating the soul is called as. Beating the soul is called as. Yes, sir. Next is your face is covered with plastic. This is called as. Your face is covered with plastic. This is called as. What this is called as, sir? Just let me know. Yes, this is called as dry submarine. This is called as wet submarine. This is called as what? Chalo, question. Next question. This is very interesting. Now just let me know what this is called as. इसको क्या बोलेंगे सर? जल्दी से बताएंगे सर. इसको क्या बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो सर. This is called as what, sir? Parrot speech. Very good. Insertion of hot metal rod into the anal canal. Insertion of hot metal rod into the anal canal. What is that, sir? Hot metal rod into the anal canal. What is that, sir? अगर hot metal का rod डाल दिया anal canal के अंदर, what is that, sir? Just let me know, sir. That is called as what, sir? Black slave. That is called as black slave. Very good. Everyone is correct. Now we are going to start with the third chapter called as thanatology. It's all about the death. So study of the death is called as thanatology. Very simple question. Study of death is called as thanatology, and definition of death was given by Declaration of Sydney. These are the important topics and the important questions right here, sir. And people who are there with us who are new, if you are finding difficulty in getting the PDF, just let me know. Okay? Chalo. The study of death is thanatology. Study of definition of death is given by Declaration of Sydney. Now what is happening now, sir? सबसे पहले हमारा heart, lung and brain. Heart, lung plus brain stop working. After that, what will happen? The circulation will stop. After circulation will stop, your cells will start dying. So there will be a time gap between stopping of cessation of heart, lung and brain and the cellular death. Those time gap is called a supravital period. And somatic death is something where your heart, lung and brain stop working. So guys, remember somatic death, Bishop tripod is there where heart, lung and brain stop working. Then after somatic death, there will be a cellular death. Between somatic death and cellular death, there would be a time that is called as supravital period. That is called as what, sir? Supravital. So somatic death and cellular death ke beech mein there is a particular time, and that particular time is called as supravital period. Done. Now what are the postmortem changes? The postmortem changes you are going to see after the death is called as taphonomy. First of all, your length will increase 2 to 3 centimeter. How the length is increasing by 2 to 3 centimeter? Because your vertebra is now relaxing. Otherwise, you know your vertebra is S-shaped like this. Now, after death, your vertebra will relax, which will ultimately lead to increase in the length of the body, my dear friends. Second change you are going to see in the eye. The two changes what you can see in the eye. One is railroad phenomena. One is what, sir? Railroad phenomena. Okay? That railroad phenomena is called as Kevorkian sign. You can very well appreciate right here, sir. The railroad phenomena, because of the retinal vessel segmentation, this is called as what, sir? Your, yes, Kevorkian sign. Second, you can see there will be a red color line on the sclera. The red color line, what you're seeing on the sclera, this is called as trachinoid. This is called as trachinoid, my dear friends. And this is seen in 3 to 6 hours of the death. 3 to 6 hours of the death. Now coming to the next thing is third thing what we are going to see is Algor mortis. So you can very well appreciate me here for the LG. So LG company is making the fridge. And fridge is known to decrease the temperature. Fridge क्या करता है? चीजों को ठंडा करता है. So rate of fall in summer is quite low as compared to the winter. In winter, it is just 0.5. In summer, it is 0.5. And in winter, it is 0.5 degrees Celsius per hour. So Algor mortis is LG. LG ka fridge is there. Guys, remember, temperature is decreasing. In summer, it is 0.5 degrees Celsius per hour. In winter, it is 0.7 degrees Celsius per hour. Done. Now coming to the next is postmortem caloricity.
Moment the word calorie is coming, that means something which is increase in temperature we are dealing with. Something you should know that initially in some causes of death, you will see the body remains warm. After that, decrease in temperature would happen. Guys, remember? ठीक है? उस चैनल पे वेट कर रहे हैं. Very sorry यार, इस चैनल पे होने वाला था forensic. Postmortem caloricity, there is an increase in temperature. Body remains warm for first 2 hours. Then it start decreasing the temperature. Heat stroke, pontine hemorrhage, septicemia. These are some causes of death where you are going to see the postmortem caloricy. Initial increase in temperature will ultimately lead to decrease in temperature, my dear friends. Other than that, Livor mortis is there. Livor is like, you remember, the color is there. Postmortem staining is there. After that, you will see your blood will pool on the dependent areas. Okay? After death, what are the dependent areas? The areas which are not touching the ground. These are called as dependent areas. And the areas, yes, like this, which are touching the ground, they are called as independent areas. Now, normal cause of death, you will see because of deoxyhemoglobin, your color of hypostasis or Livor mortis is bluish. Would be what's a bluish purplish type of color would be there. Now, there are postmortem staining seen in the hanging, where you will see the postmortem staining feet, hand and penis. The areas which are under the influence of maximum gravity, you will see the color changes, my dear friends, and those are feet, hand and penis. That's it. We can do that here. After that, the cause of death according to the color we need to see. And this question was there in the exam. This is previous year question of the FMG exam. So you have to be very careful while doing this. And you have to learn along with me. I'll be asking question from all of you. If we talk about, sir, carbon monoxide poisoning, there would be a cherry red color. Cherry, because carbon Mona love cherry. Mona love to eat cherry. Cherry red color is there. Cyanide, remember cement is used to fix the brick red color is there. Hydrogen sulfide, bluish green color is there. Okay? Manu Parpar from Mari State University. Wow, very good. Sir, hydrogen sulfide, bluish greenish color is there. And opium, remember, black color is there. Sir, benzene aniline nitrate, ban. What should you ban? Chocolate brown color. If hypothermia is there, then pink color hypostasis would be seen. What is hypostasis? That is Livor mortis, seen in the dependent areas of the body after the death, my dear friends. Now, my question number 1. Carbon monoxide poisoning. My question number 1 to all broad-minded medicos, colorful FMGs, you have to write in the chat box right now, sir. In carbon monoxide, okay? Carbon monoxide poisoning, which color you are going to see? Carbon monoxide poisoning, which color you are going to see, sir? Carbon monoxide poisoning, which color you are going to see, my dear friends? You have to answer right now with me, sir. Oh, kya baat hai. Your answer should be there in the chat box. Yes, fatafat. ठीक है, चलो जल्दी से. Cherry red color is the correct answer. Cyanide poisoning. What color you are going to see in the cyanide poisoning, my dear friends? Cyanide के अंदर क्या देखने मिलेगा आपको? Cyanide. If you talk about the cyanide, my dear friends, cyanide is all about what, sir? Cyanide. It is all about, sir, cyanide, brick red color. Hydrogen sulfide. Question number 3 is hydrogen sulfide. Everyone has to answer. Question number 3, hydrogen sulfide, my dear friends. Hydrogen sulfide. What is color you are going to see? Hydrogen sulfide. Yes, hydrogen sulfide, guys. Remember, there will be a bluish green color. Opium poisoning. My next question. Opium poisoning, which color you are going to see? Opium poisoning, my dear friends. Opium poisoning, which color you are going to see? Opium poisoning. Yes, opium. What is the answer for opium? Opium is black color. Benzene aniline nitrate. Benzene aniline nitrate. My next question. Benzene aniline nitrate. Benzene aniline nitrate, my dear friends. Benzene, alanine and nitrate. Remember, there will be a chocolate brown color. What about the hypothermia? What about the hypothermia, my dear friends? Hypothermia. Hypothermia. Hypothermia, guys. Hypothermia.
So these are all for the Livor mortis. I hope Livor mortis is clear to all of you, my dear friends. You guys are doing so good, so great, so proud of you. Now coming to the Rigor mortis. Rigor matlab rigidity. And rigidity comes once there is a decrease in ATP. Rigidity कब आती है? जब ATP कम होता है. This will lead to stiffening of the muscle. अगर कोई पूछे राइगर मोटिस सबसे पहले कहाँ पे आएगा, where the rigor mortis is going to come at the first, remember this is going to come at the myocardium followed by eyelid. And one rule is there that is called as Niston rule. What this Niston rule says, it starts from eyelid and it goes to the toe. Starting from eyelid goes to the toes and finger. This is called as Niston's rule. This is called as what, sir? Niston's rule. Guys, remember Niston's rule. Rigor mortis, eyes are there. From eyes it will goes to toes and finger. This is called as Niston's rule. Again, a previous year question of the FMG exam. Anyone there who understand only English? Yesterday I was getting feedback. Please teach in English. So anyone is there who understand only English? If that kind of superstar is not here, so I can switch to Hindi English version of mine later on. चलो जी, चलो शुरू करते हैं. यहाँ पे राइगर मोटिस मतलब क्या है? रिजिडिटी आ गई. रिजिडिटी क्यों आई सर? एटीपी का लेवल कम हो गया था. एटीपी का लेवल कम होने की वजह से यहाँ पे रिजिडिटी आया था. फर्स्ट साइड कोई पूछे आपसे तो क्या है? फर्स्ट साइड इज मायोकार्डियम. इंटरनल साइड इज मायोकार्डियम, एक्सटर्नल साइड इज आईलिड, एंड ओवरऑल मोस्ट कॉमन साइड का बात करेंगे. योर आंसर वुड बी वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम. मायोकार्डियम. चलो जी, क्लियर हो गया. अदर रूल विच इज फॉलोड ओवर हियर इज व्हाट्स अ रूल ऑफ 12. व्हाट इज दिस रूल ऑफ 12 माय डियर फ्रेंड्स? 12 कहता है 12 घंटे में आती है, 12 घंटे में आती है, 12 घंटे रहती है, 12 घंटे में चली जाती है. 12 घंटे में आती है, 12 घंटे रहती है, 12 घंटे में चली जाती है. सर ये कौन है? Remember something about this. This is called as rigor mortis. 12 hours it will involve all the muscles. ठीक है. 12 hours it will remains and after 12 hours it will disappear, my dear friends. God bless you all of you. ठीक है, क्लियर हो गया फंडा? बड़ी खुशी हुई, खुशी आई मारी यूनिवर्सिटी से. वाओ, आज दिन खुशियां दा चढ़िया, आओ सजनो ओ दिन खुशियां मनाओ जी. खुशी जी आए हैं, बड़ी खुशी की बात है आज. बहुत अच्छा लगा. ठीक है, पूजा भी आई है. खुशी और पूजा दोनों आई हैं जो है हमारे बीच में. वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. निकिता जी भी आई हैं, मैड प्रो लाइफ भी आए हैं. बहुत दूर दूर से बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग हमारे बीच में जुड़ रहे हैं दोस्तों. बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े लोग हमारे बीच में जुड़ते हैं. दिन बन जाता है हम जैसे गरीबों का, और अच्छी बात है दोस्तों. खुशियां बढ़ती जानी चाहिए, पूजा करते रहना चाहिए इंसान को, ताकि जीवन में जो है आनंद रुकना नहीं चाहिए, है ना. खुशियां और पूजा दोनों जो है लाइफ में चलती रहनी चाहिए दोस्तों, है ना. चलो ये भी अच्छी बात है, सब चीज अच्छी बात होती है. ठीक है. नरेंद्र भी आया. तुम भी बताओ भी, तुम भी कहाँ से हो? जल्दी बताओ तुम भी. नरेंद्र फ्रॉम हरियाणा, रवि फ्रॉम फलाना, सारे लोग बताओ, अपने अपने बताओ. यू आर फ्रॉम, यू आर फ्रॉम, यू आर फ्रॉम, है ना. मजा आएगा. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कंडीशन दैट लुक लाइक राइगर मोटिस. ऐसी कौन सी कंडीशन है जो राइगर मोटिस जैसी दिखती है? सर ऐसी कौन सी कंडीशन है जो राइगर मोटिस जैसी लगती है? रिमेंबर, कैडावेरिक स्पैज्म. कैडावेरिक स्पैज्म में एटीपी कम हो जाता है. क्यों एटीपी कम होता है? इसी वजह से रिजिडिटी आती है. अब देखो इसके अंदर ग्रास पार्टिकल्स आर देयर इन द हैंड, दैट मींस साइन ऑफ स्ट्रगल इज प्रेजेंट. विल यू कंसीडर दैट एज एंटीमार्टम ड्राउनिंग और पोस्टमार्टम ड्राउनिंग? एंटीमार्टम ड्राउनिंग है कि पोस्टमार्टम ड्राउनिंग है? This is postmortem drowning or antemortem drowning? Just let me know this thing. Antemortem drowning or postmortem drowning? अरे आंसर भी तो दे दो यार. सुभाष जी जयपुर से, भजन जी कोटा से, बाबा युगांडा, दिकाना. पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग, पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग. क्यों पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग? एंटीमार्टम ड्राउनिंग क्या होती है? जब इंसान जीवित होता है, अगर एंटीमार्टम मींस पर्सन वाज अलाइव बिफोर डाइंग, पोस्टमार्टम मींस द पर्सन वाज डेड बिफोर डाइंग. सो यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रगल है, मतलब मरने से पहले आदमी जिंदा था. टाइगर जिंदा था, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है. ठीक है, टाइगर पहले जिंदा था, उसने पानी के अंदर गया, इसने बचने की कोशिश करी, मरते मरते उसने ग्लास पार्टिकल सारी एटीपी खर्च कर दी, जिसकी वजह से सारी एटीपी खर्च करने की वजह से क्या हो गया सर?
यहाँ पे सारा का सारा मसल एक जगह इकट्ठा हो गया, इसी को बोला गया कैडावेरिक स्पैज्म। दिस वाज रीसेंट एफएमजी एग्जाम क्वेश्चन, आएगा आपकी बार भी। हीट स्टिफनिंग और कोल्ड स्टिफनिंग। हीट स्टिफनिंग इज लाइक अ ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट बनाते हो सर, व्हाट इज देयर इन द एग, एग के अंदर क्या है, एग के अंदर क्या है सर, प्रोटीन होता है। whenever you are heating the egg will become omelette, ठीक है, जैसे ही अंडा होता है, अंडे को हीट करते हो ऑमलेट बनते हैं। सेम हमारी बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटीन्स है, मसल के अंदर प्रोटीन है। whenever there is a increase in temperature, all those muscle will coagulate and body will get a posture, this is called as heat stiffening. now all the fluids in a body, जितने भी बॉडी के अंदर फ्लूइड हैं, वो सारे के सारे फ्लूइड अगर आपके इकट्ठा होके जम जाते हैं तो जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट मूव नहीं कर पाता, दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड स्टिफनिंग माय डियर फ्रेंड्स। body fluids become ice crystal, joint cannot move, cold stiffening would be there. We can see boxer's attitude or pugilistic attitude. This is boxer's or pugilistic attitude. This kind of attitude would be seen in the burn patient. Moment the burn is there, everything will coil down. हर चीज क्या होती है, पीछे पीछे की तरफ आने लग जाती है, ऐसे जैसे बॉक्सेस खड़ा होता है ना, जब भी आप डेड बॉडी को देखो ना जलने वाली, इन द एंड ऑफ दैट यू विल सी इट विल बी लाइक दिस। और यहाँ पे बॉक्सिंग एटीट्यूड, क्या बोलता है सर, बॉक्सिंग एटीट्यूड, डन 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 डन। चलो ये भी खत्म हो गया। नाउ कमिंग टू द प्यूट्रीफैक्शन। So those are the things which we can see after the death. Now putrefaction is something when body start decomposing. When the body start decomposing, this is the surest sign of death. ठीक है, अगर बॉडी सड़ने गलने लग जाती है, इसका मतलब अब बॉडी का रिवर्सल नहीं है। Now there is a bacteria, there is an enzyme which is responsible. If someone is asking you about the bacteria, then you have to remember answer as Clostridium welchi. अगर आपसे कोई बैक्टीरिया की बात कर रहा है तो योर आंसर इज क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई। और अगर कोई एंजाइम का बात करेगा दैट इज लेसिथिनेस। एंजाइम होगा तो लेसिथिनेस होगा, बैक्टीरिया होगा तो क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई होगा। चलो ये भी क्लियर हो गया। पहला कलर चेंज क्या होगा सर, अगर आपसे पूछे कि प्यूट्रीफैक्शन के अंदर सबसे पहले कलर चेंज होगा तो कहां पे होगा, आपका आंसर होगा राइट इलियक फोसा। कोई पूछे ये ग्रीनिश कलर क्यों आता है सर, सल्फा, क्या है, मेथॉक्सी सल्फा हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। क्लियर हो गया बेटा, मेथॉक्सी सल्फर हीमोग्लोबिन इज देयर, बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी अ ग्रीनिश डिस्कलरेशन एट द राइट इलियक फोसा। चलो कारण भी पता चल गया। अब आया दूसरा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोथ एफएमजी एंड नीट पीजी एग्जाम, दैट इज कॉल्ड एज मार्बलिंग। यू विल सी मोमेंट द डेथ इज हैपनिंग, आफ्टर डेथ योर बॉडी विल स्टार्ट श्रिंकिंग 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 श्रिंकिंग। मोमेंट द बॉडी स्टार्ट श्रिंकिंग, your vessels will become prominent. So marbling is something which is seen on the chest and thigh. Superficial veins become prominent. Red green color is seen, my dear friends. Marbling is seen on chest and thigh, my dear friends. And remember guys, superficial veins become prominent and they are mostly seen as red green color. Now maggot formation. Maggot formation का मतलब है अब क्या हो गया, मोए मोए हो गए। सलोनी जी भी आई है, सलोनी आई है सलोनी आई है हमारी क्लास में, हमारी यूनिवर्सिटी से, देखो देखो ये तो आई है सलोनी, आई है सलोनी। मेरी सॉरी गाइस, कोई ऑफेंड मत होना, ऐसे मेरे मजाक करने की आदत है ना, मैं कभी कभी बस, ठीक है। संस्कृति भी आई है संस्कृति आई है, रिचा सलोनी संस्कृति नफीसा शिवम सब लोग आए हैं, मनु भी आया है, जानवी भी आई है, बाय बाय, वाओ गाइस कितने सारे लोग आए हैं, अक्षय भी आया है, काफी बहुत सारे लोग आए हैं, वाओ मेरा दिन बन गया, आप लोग आए, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ओ वाओ कितने सारे लोग, देखो सुमित आया है, सब लोग आए हैं, वाओ कितना बड़ी बात है, देखो खुश हो जाओ। जानवी भी आई है, वेरी गुड। मनु भी आया है, सुमित भी आया है, दिव्यांशु भी आया है, सनवर भी आई, सौरभ, वाओ सब लोग, साउली सलोनी भी आए, वाओ। चलो ठीक है सर। मैगट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या ना कीड़े पड़ रहे थे दोस्तों, जो भी आए हैं देखो यहाँ पे कीड़े पड़ रहे थे शरीर के अंदर मरने के बाद। शरीर कैसा है, नश्वर है, मोह माया को त्यागो, क्योंकि क्या ही लेके जाओगे साथ में, कुछ नहीं लेके जाओगे, सब चीज यही रह जाएगी, ठीक है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगा क्या रे तेरा बोल, ला 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 ला। सो गाइस कीड़े पड़ रहे थे यहाँ पे, लार्वा ऑफ द फ्लाई इज कॉल्ड एज मैगट, और अगर ये बन जाए तुम्हारे नाक कान के अंदर तो उसको बोलते हैं मैगट फॉर्मेशन।
सर नॉर्मली इट इज सीन इन 48 आवर्स 2 to 3 days, बट अगर रिम जिम बरसा पानी, अगर बारिश पड़ती है तो ये पहले हो जाता है, 1 से 2 दिन में कीड़े पड़ जाते हैं वैसे कीड़े, ठीक है। जनानी, वाओ, जननी की जनानी, चलो क्लियर हो गया, चलो क्लियर हो गया सर। गैस प्रोडक्शन भी होती है प्रीडोमिनेंट, अब देयर इज अ गैस प्रोडक्शन दैट इज व्हाई बॉडी इज फ्लोटिंग। मरने के बाद क्या होता है ना सर, गैस प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से फ्लोटिंग होती है, तो प्रीडोमिनेंट गैस व्हिच इज प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड, और गर्मियों के अंदर रिएक्शन हैपेंस फास्ट, दैट इज व्हाई फ्लोटेशन इन द समर्स इज विद इन 24 आवर्स, इन द विंटर्स एवरी रिएक्शन इज स्लो, only yoga is fast, every reaction is slow, only indoor yoga is fast, and guys remember इसके बाद में क्या याद करना है कि विंटर्स के अंदर फ्लोटेशन लेट होता है सर, ठीक है। चलो ये भी अच्छा याद कर लिया। Now what are the organs involved in the putrefaction? What are the organs involved in the putrefaction? एक बुरबोन बिस्कुट भी लेना, ठीक है। Organs involved in the putrefaction, the first is larynx or trachea, the last is bone or tooth। फर्स्ट ऑर्गन इज लैरिंक्स ट्रैकिया, द लास्ट। पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये देखो, मुझे अब इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम पे क्यों मैसेज कर, इंस्टाग्राम पे तो कर ही सकते हो वैसे, पी जमाल 7 प्लस मेरा जो है ना, मैं तुम्हें कहाँ से दिखाऊं, वो जो मेरा टेलीग्राम, कौन मदद करेगा इनकी, अभी कोई नौजवान युवा अपने मारी के दोस्तों की मदद करे, अगर तो मेरी पीडीएफ इन तक पहुंचाई जाए, अपना कोई नंबर दे दो, उस नंबर से उस बंदे को फॉरवर्ड करना, उस नंबर के फॉरवर्ड करने से आपको पीडीएफ उनके ग्रुप में पहुंच जाएगी। तो मारी स्टेट का एक अलग से पीडीएफ इज ऑन टेलीग्राम, जानवी को सब पता है, जानवी सब जानती है। चलो सो गाइस रिमेंबर, फर्स्ट ऑर्गन इज लैरिंक्स ट्रेकिया, लास्ट इज बोन और टूथ। प्यूट्रीफैक्शन में कौन सी ऑर्गन्स होती है, कैन यू टेल मी? राइगर मोर्टिस के अंदर सबसे पहली ऑर्गन कौन सी इन्वॉल्व होती है? माय क्वेश्चन इज, राइगर मोर्टिस के अंदर सबसे पहली ऑर्गन कौन सी इन्वॉल्व होती है? Now another thing is Casper dictum, a previous year question, rate of putrefaction। अब कैसे, कहां पे कितना रेट होता है सर? सबसे पहले हवा होती है, हवा के अंदर पानी, फिर मिट्टी। 1 वीक 2 वीक 8 वीक, अगर आपको हवा में रखा जाता है मरने के बाद तो आप 1 हफ्ते के अंदर राख बन जाएंगे, पानी में रखा जाता है तो 2 हफ्ते में गल जाओगे, मिट्टी में सर आपको 8 वीक के अंदर आप जो है गल के राख हो जाओगे। क्लियर हो गया फंडा? चलो क्लियर हो गया ना। हाँ, माई टेलीग्राम ग्रुप नेम इज चैंटिंग वाला, जैसे फिजिक्स वाला है उसी तरह से चैंटिंग वाला है, ठीक है। हार्ट, वेरी गुड। मायोकार्डियम, शाबाश मेरे शेरो, क्या बात है, क्या बात है। ना टाइप ऑफ प्यूट्रीफैक्शन में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एडिपोसीर। सर क्या होता है ना, फैट इन अ बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, देन फैटी एसिड इज बाइंडिंग विद द कैल्शियम। क्या बोला दोबारा से? फैट इन अ बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, fat in a body is converted into fatty acid, and guys remember fatty acid will bind to the calcium, it will lead to what sir? Your adipocere formation, एडिपोसीर फॉर्मेशन, ठीक है। और ये कैसी फॉर्मेशन है? सोप बबल लाइक अपीयरेंस। कैसी अपीयरेंस है? सोप बबल लाइक अपीयरेंस। तो देखो अब मैं जो बोला उसको वापस से बोलूंगा, फैट इन अ बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड व्हिच कंबाइंस विद कैल्शियम फॉर्म्स एडिपोसीर, दैट इज soap like, guys you can see very well over here, soap like adipocere. Now what are the factors you required for the conversion? If you talk about the factor, warm moist climate is a first approach, second is Clostridium welchi, lecithinase। लेसिथिनेज एज लगा हुआ है मतलब ये क्या है? एंजाइम है। एज लगा है मतलब एंजाइम है। और क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चा इज व्हाट सर? बैक्टीरिया। वेल्चा इज व्हाट सर? बैक्टीरिया। नाउ स्मेल ऑफ एडिपोसीर, ए फॉर एडिपोसीर, ए फॉर एमोनिकल सर। एडिपोसीर का एमोनिकल है। टाइम टेकर फॉर एडिपोसीर फॉर्मेशन इज 3 days to 3 months। अगली बार एग्जाम में ये इमेज आती है, हूबहू आंसर आपको देने पड़ेंगे। व्हाट इज हैपनिंग हियर? Fat is converted into fatty acid. Fatty acid binds with calcium, leads to adipocere formation. Adipocere, what is the smell of adipocere? Can you tell me? It is ammonical. Time taken for adipocere formation, sir, 0 to 3 months. Done, sorry, 3 days to 3 months. चलो, ममिफिकेशन इज नथिंग बट अ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी। अगर किसी बॉडी को सुखा दिया जाता है तो सोचो इसके अंदर आपको कैसा वाला एनवायरनमेंट चाहिए? ड्राई, बिल्कुल सूखा सूखा एनवायरनमेंट चाहिए सर। रिमेंबर द टाइम टेकन इज 3 months to 12 months। व्हाट इज द टाइम टेकन राइट नाउ सर? 3 months to 12 months, 3 months to 12 months, and smell is odorless। Smell is odorless।
जो लोग रशिया से क्लास को देख रहे हैं, अब दोबारा से बता सकते हैं क्लास में हो कि नहीं हो, बस नाम लिख के चले गए आप लोग, क्या आपका मन करता है पढ़ने का? जो अभी रशिया में बैठे हुए हैं ठंड के बीचों बीच, क्या कोई ऐसा नौजवान या युवती है जो वहां से क्लास को निरंतर पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखेगी या देखेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई है बचा हुआ, कि बस लिख के चले गए, बस अटेंडेंस लगा के चले गए, जैसे हम लोग लगाया करते थे कॉलेज में, आए सुबह अटेंडेंस लगाई और पीछे से भाग गए? ऐसा नहीं करा ना? मुझे लगता है वैसा ही है। Mummification is dying and dehydration of the body is called as mummification. Time is 3 months to 12 months and smell is odorless, my dear friends. Clear हो गया फंडा? चलो guys remember, yes, embalming is called as thanatopraxia. अब क्या है ना इसके अंदर, आर्टिफिशियल फ्लूइड्स से क्या किया जाता है ना सर, आर्टिफिशियल फ्लूइड्स को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी को क्या कर सको आप, प्रिजर्व कर सको। क्लियर हो गया फंडा? ये बेचारे 3 लड़के ही बचे, बाकी सब चले गए। सिर्फ 3 लड़के बचे हमारे नौजवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी सब चले गए। प्रेरित काक दिला ब्रात, सिर्फ लड़के बेचारे लास्ट तक टिके रहे, बाकी सब आए, अटेंडेंस लगाई और बाय बाय। आज आज मैनू एक कुड़ी मिली, ओदी गल्लां दे विच टोए मोए मोए। Embalming is called as thanatopraxia, artificial method of preserving body by injecting the fluid. The time taken would be what sir, less than 6 hours, and the fluid used would be what sir, PM की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री की गर्लफ्रेंड। यस सर, प्रधानमंत्री की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री की गर्लफ्रेंड, है ना? जो नहीं है। P for phenol, M for methanol, G for glycerin, F for formaldehyde. So this is Pradhan Mantri की girlfriend and we have done. चलो आगे बढ़ेंगे। पोस्टमार्टम टेक्निक्स। So चैप्टर नंबर 3 में हमने कितनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी सर। डेथ के बाद, अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा तो तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। डेथ के बाद क्या सर, डेथ के बाद हमारी लेंथ बढ़ती है कि कम हो जाती है? तो जो जिन लोगों की हाइट छोटी है ना, खासकर लड़कियों को बहुत टेंशन होती है, उनकी हाइट छोटी होती है। सो डोंट वरी, आफ्टर डेथ क्या होगा ना सर, थोड़े से लंबे हो जाओगे तो मजा आएगा, ठीक है? हील्स भी पहनोगे, और ज्यादा लंबे हो जाओगे ना, टेंशन मत लो आप, ठीक है? चलो क्लियर हो गया फंडा? हाइट बढ़ जाती है सर। वो टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज व्हाट? डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं सर? मैंने बताया था ना, एलजी का फ्रिज, उसको क्या बोलते हैं? एलजी के फ्रिज की बात करते हैं सर, क्या होता है एलजी के फ्रिज के अंदर? It is called as Algor mortis. What about the rigidity and the causes decrease in ATP? What that is called as? Rigidity and decrease in ATP. What that is called as? Rigidity, decrease in ATP. What that called? What that is called as? That is called as Rigor mortis. And what about the color? The hypostasis. What we are going to see in the dependent areas of the body, my dear friends. What is your answer? Dependent area के अंदर जो हाइपोस्पेस देखने मिलता है, उसका क्या आंसर है सर? आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, वेरी गुड। चलो ये भी हो गया काम अपना फर्स्ट क्लास का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट सर, इम्पोर्टेंट। चलो सर, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, पोस्टमार्टम टेक्निक्स। पोस्टमार्टम टेक्निक्स की अगर हम बात करेंगे, नंबर 1 इज ऑटोप्सी। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना है तो व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑटोप्सीज वी आर हैविंग? द नंबर 1 टाइप ऑफ ऑटोप्सी यू हैव टू फोकस राइट हियर सर, मेडिको लीगल ऑटोप्सी. So the most common type of autopsy which is done in India is medico-legal autopsy. It is done in case of unnatural death. Unnatural death as in murder. अगर मर्डर वगैरह से अगर आपको शक है कि किसी ने मारा होगा, जैसे कि यंग फीमेल है, अपने ससुराल में डेथ हो जाती है डाउरी के चक्कर में, अगर आपको लगता है किसी ने मारा होगा, फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पसेस medico-legal autopsy is done. Now, in medico-legal autopsy, if someone is asking you, do you need consent? Your answer is no need of consent. Your answer is what, sir? No need of consent. Clear हो गया फंडा? चलो ये भी clear हो गया. Other than that, it can be done on the requisition of an investigating officer. These are the important point about the medico-legal autopsy. Secondly, we are having clinical or pathological autopsy. This is again done under unnatural death. For example, any disease was there.
You want to know that what was the cause of death, and in such cases na relative consent is mandatory. Relative consent is mandatory कि आप, let's suppose the patient was admitted in the hospital, suddenly the patient died. He was already diagnosed with a disease and he dies of some unknown reason, and the attendant of the patient wants to claim some insurance or something like that. In that scenarios, they can ask for what was the cause of death. They want to know the cause of death. For that, they will ask for the clinical or pathological. So there, the relative consent is mandatory, but in the medico-legal autopsy, guys, remember the relative consent is not at all required. Now coming to the virtual autopsy. Sir, whole body imaging is done. Virtual autopsy में what is happening, sir? Whole body imaging is done. Done. इसमें सर MRI, इसमें CT scan, सारी चीजें करी जाती है और शरीर को भाड़ा चीरा नहीं जाता है. Now coming to the obscure autopsy. Now sir, हमने body को खोला पीला सब कुछ कर लिया. We have done everything, but remember there is no gross finding. So we will go for the micro examination, histopath, microchemical examination to know the depth of the disease, my dear friends. Other than that, negative autopsy is there. When autopsy fails to reveal the cause of death, हमने सारे तंत्र विद्या अपना ली. We done everything odd and even, and we are not at all getting the cause of death. In such case, we consider this autopsy as a negative autopsy. So 5 types of autopsies are clear to all of us. Now I'll ask you questions and you have to mark answers right now in front of me. Sir, relative consent is mandatory. Relative consent is mandatory and done in unnatural death. What type of autopsy I'm talking about? Relative consent is mandatory and done in unnatural death. Relative consent is mandatory and done in unnatural death. What type of autopsy I'm talking about? You have to talk right now. Pathological or clinical autopsy. Pathological or clinical autopsy. My second question to my friends. Done in unnatural death on the requisition of the investigating officer, and relative consent is not mandatory. This is most common type of autopsy which is followed in India. The most common type of autopsy which is followed in India would be, most common autopsy which would be followed in India would be. Now my question and your answer. Every brave heart over there. This is called as medico-legal autopsy. Sir, the gross findings are minimal. Then we have to go for the micro level examination, histopath examination, chemical examination. What type of autopsy I'm talking about, sir? The gross findings are minimal and we have to go for micro examination. Micro examination. What type of finding we are going to talk about, sir? Let me know, sir. What's the next answer? This is called as obscure autopsy. My friends, my next question. Now, whole body imaging is done. What type of autopsy I'm going to talk about? Whole body imaging is done. What type of autopsy I'm going to talk about? Whole body imaging is done. What type of autopsy I'm going to talk about, sir? पूरी body की autopsy हो रही है. What type of whole body का MRI, CT scan, etc. is done. What type of autopsy we are going to talk about, sir? Autopsy, what we are going to talk about, what's here is a virtual autopsy. And if the gross findings are minimal and autopsy fails to reveal the cause of death after every attempt, every procedure we have done, and after that also autopsy fails to reveal the cause of death. If after doing every procedure autopsy still fails to know the cause of death, what is your answer then? And now your answer is what's a negative autopsy. So how beautifully we have revised each and everything, right with me? Now, first cavity to open in the poisoning cases is always the cranial cavity. Because the moment you open the cranial cavity, the smell would be coming. And just by smelling the cranial cavity, you will come to know what type of poison was inhaled or taken by or ingested by the victim. So this is a scenario. Newborn always try to open first the abdominal cavity. If the cause of death is air embolism, you have to open the ventricle first. Now, in case of asphyxial death, this is something which was previous year question of the FMGE exam. If asphyxial death is there, my dear friends, the bloodless dissection is needed. First cavity need to be open would be thorax. First cavity need to be open would be the cranial cavity. So remember, guys, first cavity is cranial cavity, followed by thoracic cavity, followed by abdomen. In the last, you have to open the neck. I will repeat again for all of you.
First cavity to be opened would be the head, then thorax, then abdomen. In the last, we are opening the neck. Why neck in the last? Because we need bloodless dissection, my dear friends. And if we talk about the type of incision, the most common type of incision which is done in the adult would be the eye type of incision. Adult के अंदर which type of incision we are going to do? That is eye type of incision, that is taken from pubic symphysis to the chin. What about the newborn children? Newborn children, what type of incision you are going to give? You are going to give inverted Y. Inverted Y incision you are going to give like this, my dear friends. So these are the two important incisions for your exam. Now we'll be moving on to the new topic what I have added. This was asked in the recent exam. So guys, method of autopsy. number 1 I have Lutely's method. Lutely's मतलब सब लुट गया, मैं लुट गया मान कर दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, ला 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 ला, गुलाबी आंखें नहीं शराबी आंखें जो तेरी देखी दीवाना ये दिल हो गया, संभालो मुझको ऐ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया. After listening to your words, I am of nowhere. Moment I see your alcoholic eyes, I feel wonderful. My dear friends, this is the translation of the song. Guys, remember method Lutely's मतलब लूट गया, सब लूट गया. कैसे लूट गया? Entire organ mass is removed at once. एक साथ में entire body mass is removed. क्लियर हो गया? एक साथ में निकाल जाता है. लूट इसको एन मासे, इसको क्या बोला जाता है? एन मासे बोला जाता है. एन मासे. क्लियर हो गया फटा? चल डन 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 डन. नेक्स्ट इज गॉन्स. गॉन्स मतलब क्या होता है सर? एन ब्लॉक. Organs are removed in individual block. एक ब्लॉक, दो ब्लॉक. गॉन. पहला गया, thoracic गई, abdomen गई, pelvic गई. तो गई. ब्लॉक 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 ब्लॉक. ठीक है? That is what sir? ब्लॉक 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 ब्लॉक. ठीक है? कृपाल यादव कहते हैं सर मेरी वाली नीली है. अरे पर्सनल बातें क्यों बता रहे हो भैया? तेरी वाली नीली है, किसी की बिल्ली है, किसी की नीली है, कैसे कैसे, है ना? मैंने I always tell boys are dogs and girls may be like a cat. Cat says meow, may I come? Dog says ow ow. So gons is done, virtues is done, organs are removed one by one. Now virtues के अंदर क्या है? विचित्र बात है, एक के बाद एक ऑर्गन रिमूव हो रही है. पहले लंग्स हटाए, हार्ट हटाया, फिर हमारा जो है हमारा ये अपना प्यारा सा पेट, एब्डोमेन. ठीक है? तो एक एक करके ऑर्गन्स हटाई जा रही है. तो गाइस रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज विर्चो. वीरे एक के बाद एक हटाओ. वीरे विर्चो. रॉकी टेंस की मेथड इज इन सीटू. रॉकी भाई बाहर नहीं निकले. रॉकी भाई ने बॉडी को बाहर ही नहीं निकलने दिया, अंदर ही अंदर काट के बैठ गए. रॉकी भाई बड़े चालाक थे. Organs are dissected inside only, used in infectious disease like HIV etc. अगर cause of death HIV etc होता है तो क्या होता है? रॉकेटेंस की मेथड यूज करते हैं, इन सीटू मेथड. अब मैं पूछूंगा सारी अगर ऑर्गन्स एक साथ निकाल दी जाए दैट इज कॉल्ड एज, सारी ऑर्गन्स अगर एक साथ निकाल दी जाए दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सर? सारी ऑर्गन्स अगर आपकी एक साथ निकाल दी जाए व्हाट दैट इज कॉल्ड एज, व्हाट मेथड इज दैट सर? प्लीज रिमेंबर सर, you have to answer yes. ऐसे नहीं मजा आएगा सर. That is called as लूट गया, सब लूट गया. ठीक है सर? एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक हटाया जाएगा. बुरबॉन, ये वो दूसरा वाला क्रीम वाला. अरे यार तेरे को बुरबॉन नहीं मिला यार. कोई बात नहीं, इट्स ओके. अरे चाय वाला गाना तो मैंने सुनाया नहीं यार. मेरे रशियन दोस्त मारी यूनिवर्सिटी वाले, लो इंडियन चाय पी लो. ओ पी लो जी श्रीमान, आज तुम गर्म चाय का प्याला. ओहो ओ पी लो जी श्रीमान, आज तुम गर्म चाय का प्याला. मेरी चाय बड़ी है सस्ती, ओ मेरी चाय बड़ी है सस्ती. ओ पी के आ जाए इसको मस्ती, मेरी चाय बड़ी है सस्ती. तो क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? चलो उसके बाद organs are removed one after another.
एक के बाद दूसरी ऑर्गन हटाई जाए। क्यों भाई, काली काली क्यों सुनाओ भाई, गोरी गोरी सुनाओ ना। सर अगर 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 बॉडी से पार्ट को बाहर बिना निकाले अंदर ही डायसेक्ट कर दिया जाए, व्हाट दैट इज कॉल्ड है? वेरी गुड। चलो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। मारी वाला है कोई की गे? मारी वाला है कोई की चलेगे? मारी वाले अटेंडेंस लगाते रहना, हर चैप्टर में अटेंडेंस लूंगा तुम्हारी में। हाँ जी, तुम भी क्या याद रखोगे, एक एफएमजी मास्टर आया था पढ़ाने के लिए। हाँ जी, मारी वाले। हाँ शाबाश, यही रहना बच्चे मेरे साथ। सबसे पहले रेस की बात करेंगे, तो रेस के अंदर क्या देखोगे? सेफेलिक इंडेक्स। बंद कर दे इसको। रेस के अंदर क्या बोलेंगे? सेफेलिक इंडेक्स। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा? सेफेलिक इंडेक्स ब्रेथ ऑफ स्कल बोन अपॉन लेंथ ऑफ स्कल बोन इनटू 100। अब इसको कैसे याद करोगे मेरे तरीके से? 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85. So you have to remember like this: 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85. So guys remember D for dark, और डार्क कौन होते हैं? नीग्रो। तो डोलिकोसेफेलिक इज सीन इन निग्रोस। ठीक है, तो क्या बोलता है? ओ मेरा ढोला नहीं आया ढोला, मेरा ढोला नहीं आया ढोला, दुनिया खेल है खेले, रोज लगावे मेले, ओ कहंदा कुछ नहीं बदला, ओ झूठ बोले हर वेले, चुप माही। माही पीवाई क्यों है पता है मुझे प्यारे। डोली इज निग्रो। मैसेट मतलब मस्ती। कौन करता है मस्ती? इंडिया वाले जब चाइना जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, तो वहां बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो इंडियन एंड चाइनीज में क्या है? मैसेट सेफेलिक। फिर आया ब्राकी। सर ब्राकी में सारी चीजें गोल गोल, तो देखो क्या है? मंगोल। यस, वेरी इजी वे टू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो remember guys, dolichocephalic 70 to 75, mesencephalic 75 to 80, brachycephalic 80 to 85, brachycephalic is in Mongol, mesencephalic Indian and Chinese, dolichocephalic is in ठीक है, चार नीग्रो। ठीक है ना। सेक्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे कि ब्लड सैंपल मिला आपको, उस ब्लड सैंपल में से आपको, ठीक है, उस ब्लड सैंपल में से आपको देखना है सर, ठीक है, उस ब्लड सैंपल में से आपको देखना है कि ब्लड मेल है कि फीमेल का है। तो ब्लड सैंपल अगर फीमेल का होगा, उसमें देखोगे डेविडसन बजा रहा है ड्रम, और ड्रम बजते ही फीमेल नाच रही कहां पे? बार में। तो डेविडसन बॉडी, ड्रमस्टिक बॉडी, बार बॉडी, डेविडसन बॉडी, ड्रमस्टिक बॉडी, बार बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड? डेविडसन बॉडी। ठीक है, ओ वाओ वेरी गुड। ठीक है, चलो क्लियर हो गया फ्रेंड? नाउ गाइस रिमेंबर, दिस इज बार बॉडी, दिस इज ड्रमस्टिक बॉडी। ठीक है, बार बॉडी एंड ड्रमस्टिक बॉडी अगर देखने मिलती है तो ये किसका ब्लड होगा? फीमेल का ब्लड होगा। क्लियर हो गया फ्रेंड? चलो जी, ओके गाइस, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल? बेस्ट, अगर आपको दूर खड़े हो और वहां से कोई इंसान गुजर रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है? सर दूर से देखा तो क्या था? नूरा फतेही का चेहरा नजर आ रहा था। ठीक है, पास जाके देखा तो क्या था? कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कुछ नहीं बोलूंगा, सब समझदार हैं। ठीक है, तो देखा सर वहां पे ऐसा है, पीछे से देखना हो तो क्या देखोगे सर? पेल्विस। तो पेल्विस अगर ब्रॉड होगा तो मतलब फीमेल है, अगर पेल्विस क्या होगा? नैरो होगा तो क्या है? ये मेल है। सो मेल एंड फीमेल पेल्विस की बात करते हैं। मेल का कैसा है सर? हैवी और लार्ज। क्या? पेल्विस। मेल का कैसा है सर? हैवी एंड लार्ज, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, पेल्विस। फीमेल का कैसा है? स्मॉलर एंड लाइटर देन द मेल। भारी भरकम होता है किसका सर? मेल का, और छोटा छोटा हैवी हैवी, सॉरी कम हैवी किसका होता है? फीमेल का।
अब कहता है सर पेल्विस की जो इनलेट है मेल की वो हार्ट शेप है, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि दिल कहाँ पे है, मेल्स का दिल कहाँ होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मेल्स का दिल जो है पेल्विक रीजन के अंदर होता है, तो शायद उसका कारण ये होता होगा। मैं कल तक कुछ और ही समझता था, पर शायद आज मुझे अपनी बातों का जवाब मिल चुका है। तो इनलेट इज हार्ट शेप एंड बॉडी कैसे डीप फनल शेप, क्योंकि मेल्स कैसा प्यार करते हैं सर, डीप लव करते हैं, ठीक है। फीमेल्स लव सुपरफिशियली एंड मेल्स लव डीपली, ठीक है। ये बात मैं नहीं, समाज कहता है, और मैं समाज के खिलाफ हूँ, और मैं फीमेल के साथ हूँ। फीमेल्स सच कहती है, बिल्कुल, लड़के होते ही ऐसे हैं, धोखेबाज से किस्म के, है ना, झूठे झूठे वादे करते हैं, फिर ऐसे मतलब झूठ झूठ बोलते हैं, मन बहलाते फुसलाते हैं, गलत काम करते हैं, ठीक है। चलो, ओवल शेप एंड फ्लैट बाउल शेप, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर, दैट इज व्हाट सर, योर फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। क्लियर हो गया फटा, ठीक है। उसके बाद ऑब्टूरेटेड फोरामेन, अगर आप सामने से मेल का देखेंगे तो ये गोल गोल होगा, ठीक है सर। ऑब्टूरेटेड फोरामेन अगर आप सामने से मेल का देखेंगे तो ये गोल गोल होगा, और अभी अगर आप फीमेल का देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर होगा सर। अगर बेस्ट पैरामीटर की बात करेंगे तो ग्रेटर शियाटिक नॉच इज द बेस्ट, व्हिच इज स्मॉलर इन द मेल एंड द वाइड एंड लार्ज इन द फीमेल सर। नाउ कमिंग टू द एज एस्टिमेशन, चलो ये पेल्विस का तो कर लिया सर हमने, ठीक है सर। चलो, कहाँ हो घर, वाओ, अनिल समोता, मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब व्हाट्सएप चल रहा है, टिंडर मिंगल क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब घर क्लास में आके पूछ रहे हैं, हाँ भाई कैसे हो, कहाँ हो, घर हो, क्या खाना खाया कि नहीं खाया, नंबर दे दो, मेरा ले लो, है ना, टाइम मिले तो बताना, किस बात के लिए, वाओ, जरूर बताएंगे भाई, पर मेरे शौक नहीं है, ये वाले शौक नहीं है मेरे, मतलब मैं बता देता, ठीक है। एज ऑफ फीटस इज calculated with the help of what's that rule of Hasse. So very simple to remember the rule of Hasse. देखो देखो, अगर सर 1 वीक का बच्चा होगा, 1 मंथ का होगा तो हाइट होगी 1 सेंटीमीटर, 2 का होगा सर 2 2 4 सेंटीमीटर, 3 मंथ्स का होगा तो 9 सेंटीमीटर, 4 का होगा तो 4 4 16 सेंटीमीटर, 5 मंथ्स का होगा तो 5 5 25 सेंटीमीटर। कितना इजी हो गया सर। एक महीने का होगा तो 1 सेंटीमीटर, 2 महीने का होगा तो 4 सेंटीमीटर, माय डियर फ्रेंड्स। एंड गाइस रिमेंबर, 3 सेंटीमीटर का होगा तो 9 सेंटीमीटर, एंड 4 सेंटीमीटर होगा तो 16 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत दोस्तों तालियां हो जाए, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही अरसों बाद एक लड़की मुस्कुराई हमारी चैट बॉक्स के अंदर, लड़कों खुश हो जाओ, ठीक है। एक लड़की मुस्कुराई है करके, देखो 16 सेंटीमीटर, 25। नाउ नेक्स्ट 5 मंथ गाइस रिमेंबर, 6 5 30, 7 5 35, 8 5 40, 9 5 45, 10 5 50. What is the height at the time of birth? At the time of birth, your height is 50 centimeter. At the time of birth, your height is what, sir? 50 centimeter. Now let's talk about the age estimation by the bones. If we talk about by the bone, ossification center appears. That means your cartilage is converted into bone. There is a long list, but let's revise something which is important. If we talk about the clavicle, clavicle is getting ossified at the age of 5 to 6 weeks. Clavicle is getting ossified. Can you just let me know? Ortho wala thing we are going to correlate here. Clavicle की अगर हम बात करेंगे sir, clavicle is the most common bone to get fracture. Most common bone to get fracture. अरे कृपाल यादव, नाम नहीं लेना था रे, यही सारी आशियां लड़ा देगा तू कमीने। चलो, clavicle का क्या है ना सर, most common, overall most common bone to get fracture. Can you just let me know the treatment of clavicular fracture? If you're going to give me the treatment of clavicular fracture, that means everything is going fine sir. Clavicular fracture के अंदर you have to remember like this sir, कौन सा वाला यहाँ पे आप ट्रीटमेंट में दोगे? Let me know sir, what is that called as? If you are able to guess that, just let me know that, because I want your answers right now, coming right from your heart to my heart and my eyes. Yes, it is figure of 8, figure of 8, figure of 8, बच्चे figure of माही कौशिक। माही ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਸੇ ਕੀ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਾ ਗਿਆ, ਰੋਤੀ ਜਿੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਾ ਗਿਆ। स्टर्नम और टेलस, S for 7 guys, 7 month। लेग की बात करेंगे, लेग्स आर एवरीवन्स फेवरेट, लेग पुलिंग, लेग पुशिंग guys। लोअर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ टिबिया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये कार्टिलेज से हट करके बन जाते हैं बोन।
अब आया छोटे छोटे बोन मिल करके बड़ा बोन बनाते हैं, 14 साल पे पटेला छोटू छोटू बोन मिल करके बड़ा वाला बनाते हैं। जिफॉइड 40 ईयर छोटे छोटे बोन मिलके बड़ा जिफॉइड बना देते हैं। डंडना 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 डन। स्कल का बात करेंगे, बेस्ट फॉर द एज एस्टिमेशन इज स्कल, ठीक है सर। नाउ फर्स्ट सूचर इज, पहले नंबर पे हमारी कैसी आदत होती है हर चीज में मैं बोलने की, ठीक है सर। द फर्स्ट सूचर इज मेटोपिक सूचर, द फर्स्ट सूचर इज व्हाट सर, मेटोपिक सूचर, मेटोपिक सूचर, ठीक है सर। लास्ट सूचर इज मैसेटो ऑसिपिटल सूचर, लास्ट इज मैसेटो ऑसिपिटल सूचर। और बेस्ट क्या है सर, सजाने का टाइम, कमरा सजाने का टाइम क्या होता है, 25 साल से लेके 50 साल की उम्र, उस टाइम कमरा सजा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी बातों का माहौल बन सकता है, ठीक है। So guys, remember first suture is metopic 1 year, last is meseto-occipital suture, best suture is sagittal suture, best suture is what sir, sagittal suture. Dandana 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 dun. Chalo, identification method, identification method guys, remember first thing is poroscopy. Poroscopy is to study the skin pores, exchange principle, जहां भी आप हाथ लगाते हो, चाहे वो चाहे वो बोतल हो, चाहे वो फोन हो, चाहे किसी का शरीर हो, कोई अंग हो, आप जहां पे भी छुओगे सर आपके हाथों के निशान वहां पे लग जाएंगे, ठीक है। और उसकी स्टडी को किसने पहचाना, सबसे पहले लोकार्ड पे, तो लोकल एरिया पे आपके निशान देखने मिलेंगे, लोकार्ड ने पहचाना, ठीक है सर। लोकार्ड ने पहचाना, किसने पहचाना, लोकार्ड ने। तो कैसे कैसे पोर होते हैं ना सर, स्क्वायर होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्स यू आर गोइंग टू सी इन द फिंगरप्रिंट्स। Now, guys, cilioscopy to study the lip print, and it was given by Suzuki. सुजुकी ने लिप प्रिंट के बारे में बताया। अगर किसी का पप्पी दे, अगर किसी ने किस करा, इंग्लिश में, I'll say in English, if someone is kissing you right on your neck or on your cheeks or on your forehead, my dear friends, somewhere on the hands also like this, आहा, तो आपका एक पैटर्न होगा पप्पी का। उस पप्पी का पैटर्न कैसा होगा, या तो वो रेटिकुलर पैटर्न होगा, नॉट रेटिकुलस आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर दूसरा वाला इंटरसेक्टेड पैटर्न हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, और पार्शियल वर्टिकल पैटर्न भी हो सकता है। क्लियर हो गया फंडा सर? तो जो मन करे ले लो सर, ठीक है। नाउ सर 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 पीलू तेरे नीले नीले होठों की सरगम, पीलू है पीने का मौसम, तेरे संग इश्क पारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग। सो गाइस रिमेंबर, ये देखो, तुम्हारे भी दिन आएंगे, तुम्हारे भी दिन आएंगे, तुम्हारे भी दिन आएंगे, देख रहे हो दोस्तों। तो ये क्या है, लिप प्रिंट का स्टडी दैट वाज गिवन बाय, दिस इज कॉल्ड एज चिलियोस्कोपी एंड इट वाज गिवन बाय सुजुकी। पैलेटोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ हार्ड पैलेट, एंड रिमेंबर आप कभी भी मुंह के अंदर उंगली डालने का अगर आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, अगर अभी भी डालने का मौका मिलेगा तो मुंह में उंगली डालोगे तो आगे देखोगे आगे वाला हार्ड है, पीछे वाला सॉफ्ट है। तो इसी को स्टडी को बोलते हैं एलन। क्या बोलते हैं, एलन। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं, एलन, ठीक है। चलो क्लियर। नाउ एंथ्रोपोमेट्री के अंदर होता है बार्टोलियन सिस्टम टू आइडेंटिफाई द मिसिंग पर्सन, लाइक बॉडी पार्ट्स, लाइक बॉडी मेजरमेंट एटसेट्रा टेकन लाइक दिस। तो सारी बॉडी का मेजरमेंट, राइट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्शन, राइट फ्रॉम द हाइट, एवरीथिंग, विथ, हाइट, लेंथ एटसेट्रा, दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोमेट्री एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर बार्टोलियन सिस्टम, माय डियर फ्रेंड्स। Dactylography is the best to identify someone on the basis of fingerprint. And to identify the fingerprint, the system was given, that is by Galton system by the William Herschel. Galton system was given by the William Herschel. Best is thumb versus little finger. Best क्या है, thumb versus little finger. और एक बड़ा क्यूट सा रूल दिया ना सर इन्होंने, जब आपने ऑब्स एंड गायनी की चैंटिंग में बोला था ना सर, fingerprint is not same in identical twins. Yes, fingerprint is never same in identical twins. This is called as quit-let rule. This is called as what's a quit-let rule. इसके अलावा सर बात करते हैं क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हेनरी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ fingerprint is loop like this. Everyone, if you can check your fingers, ठीक है sir, you will find loop. Then there is a whirlpool. Then guys, third one is arch. ठीक है, one other is there composite, that is also like this only. Now sir, most commonly is what's a loop, that is 70%. Now this was a previous year question. Permanent loss of fingerprinting is seen in, permanent loss is seen in leprosy. Yes, if a person is suffering from leprosy. Second is radiation. Third one is charring. Leprosy, radiation, charring. Leprosy, radiation and charring. You are going to see the permanent loss of fingerprints. Tattoo mark. If person is dead. Previous year question. If person is dead, all the skin is gone. Where you will
check the tattoo ka dye. The tattoo ka dye will go into the lymph nodes. Superimposition. For example, आपको कोई कंकाल मिलता है, you will find a skull at the respective places. In that area, you will check the missing person ka list in the police station, and you will do the superimposition. On that skull, you will try to match it with the actual photo. There are some software who runs and they make picture on the skull like this. You can see right here, sir. ऐसा इसको स्कल को इसके चेहरे पे रख करके देखा जाएगा और देखा जाएगा ये इसका है कि नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज सुपर इम्पोजिशन. सर स्टडी ऑफ लिप प्रिंट इज कॉल्ड एज, मैं देखूं तुम्हें. सर स्टडी ऑफ लिप प्रिंट इज कॉल्ड एज, स्टडी ऑफ लिप प्रिंट इज कॉल्ड एज. चलो जल्दी से आंसर देंगे, शाबाश अच्छे बच्चे. Cilioscopy. Study of hard palate is called as, study of hard palate is called as, study of hard palate is called as. Very good. तो बॉडी मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट की बात करो. बॉडी मेजरमेंट, जल्दी से बॉडी मेजरमेंट का बात करो. Sir, fingerprints are not same in the identical twins. What is your answer? Which rule I'm talking about? Fingerprints quadrat rule is there. Permanent loss of fingerprinting is seen when? Permanent loss of fingerprinting is seen when, sir? Permanent loss of fingerprinting is seen when, sir? Permanent loss of fingerprint is printing is seen when, sir? Let me know. क्या क्या डिजीज होते हैं जिसमें परमानेंट लॉस ऑफ फिंगरप्रिंट देखने मिलता है सर आपको? लेप्रोसी, रेडिएशन, चारिंग. लेप्रोसी, रेडिएशन, चारिंग. लेप्रोसी, रेडिएशन, चारिंग. लेप्रोसी, रेडिएशन, चारिंग. Chalo guys, we are done with this topic and now we are going to start with another chapter, that is chapter number 6. दोबारा से मारी वाले सारे अटेंडेंस लगाओगे अपनी पहले. जब तक मारी स्टेट वाले अटेंडेंस नहीं लगाएंगे मैं आगे नहीं बढ़ रहा. मैं देखूं यार कौन कौन है ना. पहले तुम मुझे इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अब मैं तुम्हारी लूंगा इंट्रोडक्शन. जल्दी से मारी स्टेट के कितने बंदे यहाँ पे हैं? मैं तुम्हारे कॉलेज में अटेंडेंस भिजवाऊंगा फिर. जल्दी से अटेंडेंस लगाओ सारे के सारे, जल्दी से बताओ.
पापा बैठे, पापा को मजे ले। So guys, अभिषेक इज देयर। चलो एक हो गया अभिषेक, पर्म वाले कृपाल जी हैं, ठीक है। चलो और कौन है? चलो सर, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज एस्फिक्सियल डेथ। सब गला घोट के मारा जा रहा है, ठीक है सर। चलो नाउ सर, लेट्स टॉक अबाउट एस्फिक्सियल डेथ। द डायग्नोसिस is the triad over here is what sir? Only Abhishek is left sir. एक ही बंदा रह गया अभिषेक हमारा, बाकी सारे लोग चले गए, ठीक है। चलो, सायानोसिस, पेटेकी एंड कंजेशन। क्या होता है ना सर, जब एग्जाम नहीं होता ना तो पढ़ाई नहीं हो पाती, मुझे पता है। जब जब पेपर नहीं होता ना सर, पेपर नहीं होता फिर पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। बस ऐसे ही आके अटेंडेंस से लगा के चला जाता है। अभी बोलूं तो तुम्हारा पेपर है कल परसों, तो सारे आके बैठ जाएंगे, हाँ ठीक है। हम भी FMG है, हमें पता है एक्चुअली कि पढ़ने का मन कब करता है कब नहीं करता है। तो गाइस, प्रिया जी भी है, वाओ प्रिया जी भी है, wow. So cyanosis, blue color would be there. Petechiae, pinpoint hemorrhage would be there. Congestion is red organ would be there. Now you can see here on the conjunctiva what is happening. There is a pinpoint hemorrhage. This is called as Tardieu spots. The pinpoint hemorrhage you are going to see whenever the person is dying because of suffocation. Whenever the person is dying because of suffocation, my dear friends, there are going to be a pinpoint hemorrhage in the eye. Whenever pinpoint hemorrhage is there, always remember guys, we are talking about Tardieu spot. Trachea noir is seen normally. Trachea noir is seen normally after the normal death taken is seen, but special kind of death in which suffocation, some kind of hanging, etc. was done. In that scenario, you are going to see something called as Tardieu spot. You are going to something called as Tardieu spot. Now, sir, let's talk about the weight of constriction. What weight is enough to constrict what organ? This was also once asked in the exam. JCTV is a mnemonic. JCTV. JCTV is a mnemonic. J for jugular vein. Jugular vein congestion required is only 2 kgs. Weight can compress it. Carotid is 5. Sir, trachea is 15. Then vertebra it is 30. Vertebra it is 30, my dear friends. Vertebra 30. Vertebra 30. Okay, sir. Now, jugular 2 kg. Carotid it is 5 kg, trachea 15, and sir, vertebra 30 kgs weight is needed for the compression. If we talk about the type of suffocation, if we talk about suffocation is the purest form of asphyxia. Number one is smothering. What is happening in the smothering? You can very well see. Bhabhi ji, bhaiya ji ka muh daba rahe hain. So what she is closing? Oropharynx and nasopharynx. So also oropharynx and nasopharynx दोनों का दोनों इसने क्या कर दिया? दबा दिया, और भैया जी वहां पे तड़प तड़प के मर गए. This is called as what's a smothering. Closure of mouth and nose is called as smothering. This is one type of smothering. Second is called as gagging, my dear friends. Second क्या है sir? Gagging. You can see there is a gag, my dear friends. You can see very well, sir. Here is a gag. There's a gag the woman is putting inside the mouth. This can lead to the closure of oropharynx, my dear friends. Once the oropharynx is closed, there can be a suffocation, and this female can die, my dear friends. This female can die, my dear friends. To please save this female, she is dying of a suffocation. This is called as gagging, my dear friends. This is called as what, sir? Gagging. Clear हो गया फंडा? चलो, clear हो गया? चलो, ठीक है चलो. Thank you ABCD. Thank you so much. Now sir, choking. क्या हो रहा है सर? अब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे बाय अ फॉरेन पार्टिकल. फॉरेन पार्टिकल क्या करा? खाना खा रही थी, जोर जोर से खाना खा रही थी, जोर जोर से खाना खाया, वो सीधा एयरवे के अंदर फंस गया. अब मुझे इसको बचाना है. कैसे बचाऊंगा सर? दोनों हाथों को पीछे से लेके जाऊंगा और ऐसे झटके मारूंगा, ठीक है. ऐसे झटके मारूंगा तो जो भी खाना फंसा होगा वो बाहर आएगा. दिस इज कॉल्ड एज हेलमेंज मैनेवर. चलो, ये भी क्या रहेगा सर? ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया. गाइस, इफ वी टॉक अबाउट द ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, सर एक बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा, ठीक है सर, बहुत ज्यादा मोटी गर्लफ्रेंड और बहुत ज्यादा पतला बॉयफ्रेंड आपस में लव खेल रहे थे, ठीक है. बहुत ज्यादा मोटी गर्लफ्रेंड और बहुत ज्यादा पतला, नहीं, बहुत ज्यादा मोटी गर्लफ्रेंड, बहुत ज्यादा पतला बॉयफ्रेंड लव खेल रहे थे. तो गर्लफ्रेंड उसकी छाती पे बोल रही थी, बेबी बोलो आई लव यू, इन डिफरेंट फॉर्म. बेबी बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. तो बेबी बेचारा आई लव यू वैसे खुश होती जा रही है, ओहो आई लव यू, ओहो आई लव यू. उसकी छाती पे बैठ जाती है, उसकी छाती दब जाती है, फिर बोलती है बेबी बोलो आई लव यू, बोलो बोलो बोलो. बोले कहां से? उसकी छाती पूरी की पूरी दब चुकी है. क्लियर हो गया फंडा? सो एस्फिक्सियल चेस्ट ड्यू टू द मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ द चेस्ट. कशिश जी आई हैं, कशिश तिवेतिया जी आई हैं. ये भी अटेंडेंस लगा के चली जाएंगी, है ना. एक क्लास के एंड तक नहीं बैठेंगे बच्चे, फिर मैं इनकी अटेंडेंस भेजूंगा इनके कॉलेज में.
ठीक है. So this is called as traumatic asphyxia, asphyxial chest due to mechanical fixation of the chest. Clear हो गया. Now king is climbing on the burr. बर के ऊपर किंग चढ़ गया. क्या हो रहा है सर? देखो यहाँ पे ये ओरोफैरिंक्स और नेजोफैरिंक्स, नेजो एंड ओरोफैरिंक्स को दिस इज कॉल्ड एज स्मोदरिंग. साथ में क्या है? ट्रोमैटिक एस्फेक्सिया, छाती पे चढ़ गया सर. तो मिक्सचर ऑफ स्मोदरिंग एंड ट्रोमैटिक एस्फेक्सिया इज कॉल्ड एज बर्किंग, एंड दिस वाज योर एग्जाम क्वेश्चन. mixture of smothering and traumatic asphyxia is called as burking. This is called as what's a burking. चलो, position matters sir. ऐसी कोई भी position का इस्तेमाल ना करें जिसमें छाती दब जाती हो. जैक नाइफ पोजीशन के अंदर भी आदमी मरेगा. तो this is also what's a lead to asphyxial death. Now let's talk about types of hanging. Sir, if we talk about type of hanging, the most common method for the suicide is hanging as compared to poisoning. ठीक है सर? ओके भाई, ओश यूनिवर्सिटी से हो विक्की भाई. ओके विक्की भाई, टेंशन मत लेनी विक्की भाई. सो हु डूज मोर हैंगिंग, मेल और फीमेल? चलो जल्दी से बताओ. हैंगिंग मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड, क्योंकि टाइम कम लगता है. मेल ज्यादा करते हैं कि फीमेल ज्यादा करती है? थैंक यू सो मच एबीसीडी. जल्दी से बताइए, मेल ज्यादा हैंगिंग करते हैं कि फीमेल ज्यादा हैंगिंग? अटेम्प्ट कौन सबसे ज्यादा करता है? जल्दी से जवाब देंगे सर. अटेम्प्ट सबसे ज्यादा कौन करता है? ठीक है, जल्दी बताओ, फटाफट आंसर दोगे सर. मेल है कि फीमेल है? सर फीमेल सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करती है. अगर अटेम्प्ट की बात हो तो फीमेल सबसे ज्यादा करती है, बट सक्सेस रेट मेल्स का ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल. क्योंकि फीमेल जब बोलती है कि मैं मरने जा रही हूँ तो वो नाड़े का इस्तेमाल करती है, नाड़े से लटकने की कोशिश करती है, नाड़ा टूट जाता है, फीमेल बच जाती है. बट जब भैया जी को गुस्सा आता है, भैया जी कहता है मैं मर जाऊंगा, वो रस्सी लेके आता है और दुकान पे जाके बोलता है सबसे मजबूत वाली रस्सी दीजिए मुझे, और वो लटक के मर जाता है. फीमेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और. इसीलिए दोस्तों, इसीलिए याद रखना, लाइफ के अंदर किसी के लिए जान नहीं देनी है. जान बहुत कीमती है. ठीक है, मेल और फीमेल को दोनों को बोलना चाहता हूँ, जान बहुत कीमती है, कृपया इसे बचा के रखें. क्लियर हो गया फंडा? सो गाइस रिमेंबर, ठीक है, मेल का सक्सेस रेट हाई है, क्योंकि मेल जाता है तो फिर सीधा गए ऊपर. शाबाश. ठीक है सर. So remember, based on the position of knot, we are dividing it into two parts. Sir, if a knot is placed on the occiput, if knot is placed on the occiput, this area, we call that as typical knot. If it is placed anywhere else, this is called as atypical. Anywhere else होगा तो क्या है? atypical. अगर यहाँ पे होगा, this is called as typical, my dear friends. Other than that, based on the suspension के बेस पे अगर आप देखोगे सर, यहाँ पे पूरा का पूरा entire body weight is acting as a constricting force, but here incomplete hanging is there. अब ये पर्सन के पैर जमीन को टच कर रहे हैं, फिर भी ये मर गया. why the person is dying? Because of the weight of head. सर इसके सर का वजन इतना ज्यादा है कि इसने कैरोटिड आर्टरी, जुगुलर वेन, सबको क्या कर दिया सर? वहां पे कंप्रेस कर दिया. So this is known as complete and partial hanging, typical and atypical knot, my dear friends. Now coming to the other cause, other things we are going to talk about here, sir. Postmortem finding in the hanging. A very important thing need to remember here. Sir, postmortem finding in the hanging, number one is tardive spot. What do you mean by tardive spot? The pinpoint hemorrhage, what was happening right here, sir? The pinpoint hemorrhage, what was happening there, sir? That is called as tardive spot. That is called as what's a tardive spot. Then coming to the la facies sympathetic. What I'm going to talk about? Yes, la facies sympathetic. Guys, la facies sympathetic, the eye is open and the pupil is dilated. The open eye with the dilated pupil, this is called as la facies sympathetic. Or la facies sympathetic is seen on the same side of the knot. जहां पे भी गांठ होगी, गांठ is Hindi word for the knot, my dear friend. तो जहां पे भी गांठ होगी वहां पे आंख खुल जाएगी, और you will see the protrusion of tongue would be the other side. La facies sympathetic would be on the same side of the knot, and the protrusion of tongue is on the opposite side. Plus there will be dribbling of saliva. Plus there will be semen discharge. Plus there will be a Simon bleed. What do you mean by Simon bleeds? Are bleeding on the anterior surface of the vertebra is called as Simon's bleed. So all those features you are going to see in the death if someone is dying because of the post suffocation or hanging.
Can you tell me the livor mortis, where you are going to see the livor mortis in such patient? I taught you in the chapter of livor mortis where you are going to see the hypostasis. What are the structures which are completely under the influence of the gravity? You have to mark answer according to that. Can you please? Sir, it is penis, hand, feet. Again, I want to repeat. Penis, hand, feet. Penis, hand, feet. Penis, hand, feet. Penis, hand, and feet. Chalo. So tardive spot, we agree. Yes, less tardive spots are there. That is what's a pinpoint hemorrhage. La faces sympathetically, eye open with the pupil dilated. Protrusion of the tongue is there, my dear friends. Semen discharge is there. Dribbling of the saliva is there. Hard bone ka fracture is there. Simon bleed is the bleeding on the anterior surface of the vertebra. Next time I'll just show you. You just have to remember what we have read so far. So what are the findings seen in the hanging person? Yes, laugh faces sympathetically. Yes, knot is placed on the occiput, my dear friends. Remember, same side there will be a laugh faces sympathetically. Plus there will be a tongue coming outside. Plus there will be a saliva coming. Plus there will be a semen coming from the penis, not from the mouth. Then anterior vertebra bleeding would be there. These all are the features you are going to see in the hanging. Plus livor mortis you are going to see in the hand, feet and penis. Hand, feet and penis. Coming to this manner of hanging. Suicidal hanging. If a person is trying to kill himself, the fatal injuries are absent. Fatal injuries are absent means there will be no sign of struggle, no snatching of skin, no fracture, no abrasion, no laceration, no contusion. And fatal period is 3 to 5. This is most common painless method. Earliest method to die. If someone has to choose how to die, better is hanging. Accidental hanging is seen in case of sexual asphyxia. You can see here the two people are having here romance and other people is demanding the asphyxia. Please choke my throat, neck so that I can feel the sexual pressure. More choking, more pressure, more choking, more pleasure, and the end point will come where only and only choking is there, no pleasure coming because the person is dead now. Because the person is dead now, my dear friends. So this thing you need to be very careful before performing such activities, my dear friends. ठीक है, चलो ये भी clear हो गया. ठीक है, चलो अच्छी बात है. ठीक है. Now, my dear friends, this is sexual asphyxia. Then homicidal hanging. That means people are going. What the people are going? Kya sir? People are going to kill you. They will come in a mob and they will tie you on the tree. वो आपके क्या करेंगे सर? ऊपर पेड़ पे आपको लटका देंगे दोस्तों. पेड़ पे लटका करके आपको छोड़ देंगे. This is called as homicidal. Sign of struggle is present. You will try to save yourself. Then there will be a fracture, then there will be a laceration, then there will be abrasion, contusion, etc. Everything would be there because you try to save yourself, but the mob is continuously coming and taking you to the heights, my dear friends. ये रशियन में क्या गुफ्तगू चल रही है दोस्तों आपस में? क्या हो रहा है ये? क्या मुझे समझाएगा क्या क्या बातें हो रही है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे भी समझना है. Next is judicial hanging, which is practiced in India. Hangman's fracture, which is seen at level C2. ठीक है सर, hangman's fracture which is seen at level C2. Now coming to type of strangulation, my dear friends. If we talk about the type of strangulation, number one is mugging with the elbow. You can see very well here, sir. अगर आप elbow का इस्तेमाल करें किसी को मारने के लिए, अपने मग्गे में लेके किसी को मार रहे हैं, then it is called as what's that elbow. निधि भी आजकल रशियन में बात कर रही है, दिव्या भी रशियन में बात कर रहे हैं, तो ये कोई और ऊपर है, ये भी रशिया में बात कर रहा है. ये क्या बात कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा. ये कैसी कैसी बातें हो रही है, गाली गलौज चल रही है. गैरोटिंग की बात करेंगे. गैरोटिंग की बात करते हैं विद द मेटालिक कॉलर व्हिच इज judicially practiced in the Spain, my dear friends. You can very well see over here. Metallic collar is used to strangulate someone. Metallic collar is used to strangulate someone, my dear friends. This is called as what's a, this is called as what's a garroting. Then throating with the hand. You can see very well here they are making love with each other. These people are making love with each other. एक दूसरे का गला दबा रहा है. This is called as throating. अगर हाथ से करोगे, this is called as throating. Now Barnes-Dola is done with the help of stick. Two sticks are taken and inside there will be neck and they are going to strangulate it.
ठीक है, चलो. Now, sir, first cavity to open in asphyxial death is a cranial cavity. After cranial cavity, there will be a thoracic cavity. After thorax, there is an abdomen. In the end, there will be a neck. Why neck in the end? Because in the why neck in the last? Because there you need a bloodless dissection. Wow, Russian student ने wow, very good. चलो क्लियर हो गया. लड़की है कि लड़का ये तो पूछ लो. लड़को अटैक. Now coming to the drowning. सर डूब करके मरना कोई पसंद नहीं करता. Why people avoid by drowning and dying? Because ये बहुत ज्यादा कैसा होता है, पेनफुल होता है. The cause, the timing of death is more as compared to the hanging. The hanging is better and safe as compared to the drowning. मोस्ट कॉमन एक्सीडेंटल होती है, सुसाइडल नहीं होती है. एक्सीडेंटल मतलब गलती से गए थे नहाने और डूब के मर गए. What are the type of drowning we are having? Wet drowning. Wet drowning के अंदर भी two things are there. One is fresh water drowning and sea water drowning. If we talk about the wet drowning, sir, the water will go inside the lungs and cardiac arrest will happen. Now guys, fresh water drowning, what is happening? The hemodilution is happening in the body. Moment there is a hemodilution, guys, remember there is an increase in potassium. Because of increase in potassium, there will be a ventricular fibrillation. Now, my dear friends, sea water drowning is there. Now, in sea water, what is more? Sodium is more. Sea water में क्या होता है सर? सोडियम ज्यादा होता है. ठीक है, सी वाटर में क्या होता है? सोडियम ज्यादा होता है. और सोडियम ज्यादा होता है तो दोस्तों याद रखना, बॉडी का सारा पानी बाहर सोडियम के पास जाएगा, पर थोड़ा सा सोडियम बॉडी के अंदर भी है. अब सारा पानी बाहर चला गया तो बॉडी के अंदर जो पानी था, वो बॉडी के अंदर जो सोडियम था वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया. Whenever there is a hypernatremia, the body will go under bradycardia. Now guys, remember this female is drowning right here, sir. ठीक है, अब इसको बचाने के लिए सब लोग कूदते हुए चले जाएंगे guys. ठीक है, तो remember guys, this is a drowning case. Drowning is divided into wet drowning. First, wet drowning is divided into two, that is fresh water drowning and sea water drowning. In fresh water drowning, there will be a increase in potassium. Whenever potassium is increased, the cause of death is what's a ventricular arrhythmias, my dear friends. And remember, sea water drowning, sodium will increase, concentration of sodium will increase. Because of that, the cause of death is bradycardia. The cause of death would be what, sir? Bradycardia. Dun 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 dun. Now dry drowning. Moment the person is entering inside the water, moment the person is entering inside the water, what will happen? Laryngospasm will happen. The cause of death is laryngospasm. No water, no air coming inside. Near water drowning, the cause of death is post drowning complication. That means you saved someone. अब ये डूब रही थी तो सारे ब्रॉड माइंडेड मेडिकोस को बचाने चले गए. इसका पानी भी निकाल दिया, माउथ टू माउथ सीपीआर भी दे दिया, है ना. लड़ाई लग गई, पहले मैं दूंगा पहले तू दूंगा, बच गई बेचारी, पर 24 घंटे बाद मर गई. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. बॉडी के अंदर गंदा पानी बहुत ज्यादा गया था. दूसरा रीजन है कि पानी साफ नहीं था, इन्फेक्शन हो गई. This is called as something called as what's your infectious death is there. ठीक है, septicemia might can happen in this. Now hydrofusion is Immerse syndrome. You have seen Russian people, what they're doing, they are going inside the cold water. Ruski brat, both देवुष्काय, यो लुबलुबाय, तिबिया, कागदेला ब्रात, 2-3 वर्ड आते हैं मुझे, बस इससे ज्यादा नहीं आते. Hydrofusion is Immerse syndrome. The cold water is touching the epigastrium. In epigastrium, you will see there is a diaphragm, and diaphragm is having a nerve supply called as vagus nerve. So, the moment there will be a cold water touching the epigastrium, there will be a vasovagal shock. Your diaphragm will stop contracting, and your lungs will be stuck at one place, and the person will be dying later on, my dear friends. Now, sir, let's talk about this. Postmortem changing in the drowning. Antemortem drowning, man, means the death was happening inside the water. First is clenched hands are there with the grass particles. The clenched hands were there. भाई हम थोड़ी कम है, हम थोड़ी मौका छोड़ेंगे कोई भी है कि तुम ही थोड़ी ना सारे रशियन आती बोल लोगे, मैं भी काम चलाने लायक तो बोल ही लूंगा, है कि नहीं. Krasivaya, Devushkaya, Yolublublati Vyaya, okay, Induski, Ruski, Brat, ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया. खराशू,
ठीक है, चलो बिलियत बिलियत चोरनी चोरनी, बिलियत बिलियत चोरनी चोरनी, खराशु खराशु, देखा कितनी बढ़िया रचना आती मुझे. So death inside the water is there. Cleansed hand with some grass particles, that is cadaveric spasm. We have seen the image also. Lungs will expand. Why the lungs will expand? Because plenty of water is going inside. The plenty of water is going inside, my dear friends, and it will lead to subpleural hemorrhage also. Along with that, from the nose and the mouth, mucoid, leathery, frothy discharge would be coming. Mucoid, leathery, frothy discharge would be coming, my dear friends. ठीक है? She is happy. See, I have said something and she is happy now. देखा काम चल गया ना, लड़का है. अब मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, कुछ नहीं बोला भाई मैंने. So guys, remember. चलो गाइस, ट्रैकिया इज मड पार्टिकल, जीआईटी के अंदर मड एंड वाटर होगा. Diatoms are the unicellular algae which are settled in the long bone. So you are going to see in the bone or femur. So diatoms, if they are seen, that means blood circulation was present because person was alive. Moment the person was alive, all the water was going into the GIT. From GIT, it get absorbed in the blood. And from blood, they are settled onto the long bones. Long bones. पानी गया जीआईटी में, जीआईटी से ब्लड में आया, ब्लड से लॉन्ग बोन में चला गया. इसीलिए अगर एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग होगा सर, अगर सर एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग होगा, ठीक है, लड़की है कि लड़का है, पहले ये बताओ यार. तुम लोग क्या कंफ्यूज करी जा रहे हो यार मेरे को कब से, है ना. लड़कियां बोल रही है कि लड़की है, लड़के बोल रहे लड़का है. तुम चाहते ही नहीं हो किसी का भला हो. बहुत ठीक है. 21 ईयर ओल्ड, फिर तो बहुत बढ़िया बात है यार. 18 साल से ऊपर है, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना. सबके सब एलिजिबल हो, कूद पड़ो. एंटी मॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम, कोई रिस्पेक्ट नहीं है अपने टीचर के लिए. देख रहे हो, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है अपने टीचर के लिए कि नहीं गुरुजी पहले आप ना, अपना सब सेट करी जा रहे हो. वहां पे बहुत बदतमीज हो, मुझे पता ही था. मुझे पता था तुम्हारी नीयत के बारे में खराब है, बहुत खराब है ना. तब नहीं गुरुजी की याद आई. चलो एंटी एंड पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग की बात कर रहे हैं सर. एंटी एंड पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग की बात कर रहे हैं सर. सबसे पहले क्या है, वॉशर वुमन सिंड्रोम. सबसे पहले क्या है सर. थैंक यू सो मच डॉक्टर गौतम, अभिषेक गौतम, थैंक यू सो मच. So guys, remember washer woman syndrome. You will see palm and soles. ये दोनों के अंदर देखने मिलेगा. एंटी एंड पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग दोनों के अंदर देखने मिलेगा. ठीक है सर. फ्लोटेशन की बात करेंगे तो बॉडी विल स्टार्ट फ्लोटिंग. Why the body will start floating? Because there is a predominant gas produced after the death. Can you just guess the predominant gas which is produced after the death? Which gas is produced after the death, my dear friends? ऐसी कौन सी वाली गैस है सर जो डेथ के बाद प्रोड्यूस होती है? जस्ट लेट मी नो सर. अरे आंसर भी दे दो ना यार, आंसर भी दे दो ना, अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग. हाइड्रोजन सल्फाइड, शिवेंद्र सिंह राजपूत, वेरी गुड आंसर. Hydrogen sulfide is a predominant gas. And I told you something, reactions happen faster in the summers as compared to the winters. Sir, reactions happens faster in the summers as compared to the winters. So in summers, the flotation would be seen within 24 hours. In winters, it might take longer time because your reactions are happening bit slower as compared to the summers. That is the reason, my dear friends. Everyone is giving correct answer. I love you all. And now we are going to the next chapter, that is 7th chapter. चलो भाई, मारी यूनिवर्सिटी से कौन कौन अटेंडेंस लगाओ फटाफट यार. Who are all are there from the Mari State University? फटाफट. हाँ, खराश हो. इल्लुप्ति भी आया, क्राशी भी आया. चलो फटाफट. राम राम जी, राम राम. चलो जल्दी से फटाफट बताओ सर. चलो जी, अभिषेक कष्टवाल यहीं पे. कौशल ओके. चलो सर, सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करेंगे सर. सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करेंगे सिरोही बीमारी से. चलो सर, नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस में अगर आपका पेनिस और वेजाइना के बीच में लड़ाई हो रही है,
If the fight is happening between penis and vagina, this is called as natural sexual offense. And if penis is fighting with any other organs like anal canal, like nose, like oral, like ears, that is called as unnatural sex. Anything, okay? Sir, remember something. Anything happening between penis and vagina is called as natural. So let's talk about the rape. What is rape? First of all, rape definition is 375 and punishment is 376. Sir, in yesterday's class, I taught you about the different IPCs about 376 is further divided into A, B, C, D, E. Now you will guess what I am going to talk about, my difference. Let me know. Sir, let me know something about if the rape victim dies or goes in coma, which IPC I'm going to talk about right now. She said, I don't love you. Oh my God. My heart is crying. वो क्या बोला है इसको रशियन में कैसे बोला है मुझे समझ में नहीं आ रहा देवुष्काय heart crying so guys remember 376A 376A that is and if there is a forceful sex after the divorce, which IPC I'm going to talk about. Forceful sex is there after the divorce, which IPC I'm going to talk about. Forceful sex is there after the divorce, which IPC I'm talking about, sir. Forceful sex is there after the divorce, which IPC I'm going to talk about. That is B. Custodial rape is there, which IPC is C. Gang rape, which IPC is there, sir? Gang rape. Your answer is D. Excess heinous crime, your answer is E. So A is away, that means rape victim dies or goes in coma. B for forceful sex after the divorce. C for custodial rape. D for dog, gang rape. E for excess heinous crime. Excess heinous crime, sir. Very good. Now, sir, if anything is against her will, that is considered as rape. उसकी मर्जी के खिलाफ माहौल बनाया तो रेप है. बिना कंसेंट के किया तो रेप है. कंसेंट लिया पर एज 18 साल से कम थी तो भी उसको क्या बोला जाएगा? रेप बोला जाएगा. और बेस्ट कंसेंट but victim was intoxicated in sin or fear. या तो उसको शराब पिला रखी थी आपने, गलत ड्रग डाल दिया उसकी सर ड्रिंक के अंदर और फिर उसके बाद आपने फायदा उठा लिया सर, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेप माय डियर फ्रेंड्स. तो अगर आप किसी फीमेल के साथ रात में शराब पी रहे हैं तो आपके आपस में संबंध बनते हैं. सुबह उठ के वो फीमेल अगर ऐसा बोलना शुरू कर देगी रात में मैंने शराब के नशे में ये सब किया, तो आपकी जिंदगी के लग सकते हैं दोस्तों. इसीलिए बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें. अगर आपने थोड़ा सा छुआ और फिर वापस आ गए, इवन अ स्लाइट टच ऑफ ग्लांस पेनिस ऑन द वजाइना, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज रेप. तो आप कोर्ट के अंदर ये नहीं बोल सकते कि जज साहब मैं तो बस छू के वापस आ गया था. नहीं दोस्तों, वो भी रेप माना जाएगा. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ रेप. स्टैचुटरी रेप क्या है सर? कोई भी सेक्स 18 साल से नीचे होता है उसको रेप कहा जाता है. Now let's talk about the examination of a rape victim. Now as a doctor you don't have to disclose the identity of a rape victim. If you disclose the identity of a rape victim, you are punishable under 228 IPC. Burden of the proof is always on a male. माहौल दोनों बनाते हैं, आपस में मजे दोनों लूटते हैं, पर हमेशा ये सब हर जगह पे होता है कि हमेशा इल्जाम किस पे लगाया जाता है? मेल पे लगाया जाता है. कंसेंट, जैसे कि थोड़े दिन पहले एक न्यूज देखी थी सर, उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर एक फीमेल बोलती है कि मुझे ओयो में बुलाया और मेरा रेप कर दिया. तो फिर मीडिया में उन लोगों ने थोड़ा सपोर्ट दिखाया. उन्होंने बोला कि मैडम आप ओयो में क्या करने गई थी? वहां बेड पे 2 बतख बनी होती, उसके साथ खेलने गई थी, क्या करने गई थी? If you are going in a OYO, that means obviously there is going to be a moe moe. If you are going into the OYO, that means definitely there is going to be a moe moe. Better you should not go there. Okay? If you are going there and then moe moe is happening, then you are complaining. That is completely a nonsense thing, my dear friends. You should not go to the meeting in a hotel room. You should not. So consent taken from a victim is under the 53 CRPC, my dear friends. 53 CRPC, my dear friends. Now crime scene पे चले गए. Crime scene पे हमने sperm को टेस्ट करना है और semen को टेस्ट करना है. For the sperm, I have a very beautiful mnemonic for all of you, sir. Barbie went to Florida to celebrate the Christmas. Barbie गई फ्लोरिडा क्या सेलिब्रेट करने सर? क्रिसमस सेलिब्रेट करने, my dear friends.
So Barbierios test, in the Barbierios test, same yellow needle shaped crystals you are going to see here, like in the uric acid. Sir, fluorescence test is there, dark brown rhomboid crystals are there, plus Christmas tree strain is there. These tests are for sperm, lactate dehydrogenase and acid phosphatase is for semen. Now blood test, screening and the confirmatory. For screening we are having a reagent called as peroxidase. So everything has to be mixed in the peroxidase, my dear friends. Okay? Guys, benzathine plus peroxidase will give you blue color. Phenolphthalein plus peroxidase will give you pink color. This is called as Castor-Meyer test. Orthotoluidine plus peroxidase will give you blue-green color. This is called as OBG. The mnemonic is OBG. This is PPP or this is BP. So benzathine peroxidase will give you blue color and phenolphthalein peroxidase will give you pink color. Orthotoluidine plus peroxidase will give you blue-green color, my dear friends. Confirmatory test, if you talk about spectroscopy is better than Takayama, then better than Tickman. So spectroscopy is best than Takayama Tickman. This is Takayama. Yama motorcycle ले नीचे गिर गए और लाल लाल कलर का खून आ गया. This is called as Takayama. If Takayama is not there, then the last option is Tickman. Here also rhomboid shaped crystals you are going to see, my dear friends. Again a previous year question. For species, the best is precipitation test. Species के लिए the best test is what, sir? Precipitation test. Hair के लिए होती है trichology. You will see right here, sir. Human hair, you will see. Human are very clever. So C for clever, cortex is greater than medulla. So you will see this part is called as cortex and center part is called as medulla. Cortex बड़ी है किससे? Medulla से. Then animal hair, my dear friends. Animal hair में क्या है? Medulla is greater than the cortex. Animal कैसे होते हैं? मंदबुद्धि. M for मंदबुद्धि, M for medulla is greater than the cortex, my dear friends. Clear हो गया फंडा? FMT 10 number की आएगी. 10 marks FMT would be there. Now, this topic you can avoid. No one is asking question from this. Now, adultery. A male having sex with wife of another male. A male having sex with wife of another male is not punishable. Wow. But can be a ground for divorce. अगर कोई शादीशुदा महिला या शादीशुदा मर्द किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाता है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों. जैसा कि आप देखो यहाँ पे ये दोनों माहौल बना रहे थे, इनका पति आ गया. अब इसका पति इसको मार नहीं सकता, ना केस कर सकता है, बट इसको छोड़ सकता है. प्यारे दोस्तों, तो याद रखना, एडल्ट्री इज नॉट क्राइम इन इंडिया. दोनों 18 साल से ऊपर है. अगर वो दोनों अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं तो ये उनकी आपसी मर्जी है. जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर किसी के साथ संबंध बनाती है तो आप उसको छोड़ सकते हो, उस पर केस नहीं कर सकते. जैसे ही बॉयफ्रेंड के लिए आता है, आपका बॉयफ्रेंड हर जगह मुंह मार सकता है, ये उसका अपना अधिकार है, पर आप उसके साथ रह रहे हो, ये आपकी अपनी मर्जी है. क्लियर हो गया फंडा? सो दीज आर द थिंग यू नीड टू रिमेंबर. नाउ कमिंग अननेचुरल सेक्सेस. आई टोल्ड यू नेचुरल सेक्स क्या होते हैं? एनी फाइट हैपनिंग बिटवीन पेनिस एंड वजाइना इज कॉल्ड एज नेचुरल, एंड एनी फाइट हैपनिंग बिटवीन एनी अदर ऑर्गन इज कॉल्ड एज अननेचुरल. अननेचुरल सेक्सेस आर पनिशेबल अंडर 377 IPC. Or first thing is sodomy, love or buggery. What is true love? Penile intercourse. Sodomy, love or buggery, my dear friends. Sodomy, love or buggery, penile intercourse is there. It can be between male and female. It can be between male and male. या तो मेल और फीमेल के बीच में भी हो सकता है, या तो ये मेल और मेल के बीच में भी हो सकता है. Then other thing is what's a pederasty. Adult having sex with male child is called as pederasty. The active male adult is called as pederast and the passive male child is called as catamite. Then coming to the lesbianism or tribadism. Guys, lesbianism or tribadism, what is happening? The two females are having sex with each other. Active female is called as butch and passive is called as femme. तो butch क्या डाई मार के चढ़ गई, butch और डाई, butch डाई मार के चढ़ गई. ये देखो, the two females are having fun with each other. The two females are having fun with each other. ये जो ऊपर चढ़ गई है, this is called as butch और डाई. डाई मार के ऊपर चढ़ गई. जो नीचे लेटी है बस मजे ही ले रही है, इसको क्या बोलते हैं? फीम. हफीम खा के नीचे लेट गई. दिस इज कॉल्ड एज फीम. फीम फीम फीम. डॉक्टर लव, हाय 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 हाय, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, हाय 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 हाय. सो गाइस रिमेंबर,
Buccal coitus also called as oral sex. This is also called as sin of Gomorrah. Oral sex or sin of Gomorrah. Fellatio is an oral stimulus of a penis by a female. Oral stimulus of a penis by a female is called as fellatio. This is called as what, sir? Fellatio. Remember? And guys, oral stimulus of a vagina by a male is called as cunnilingus. Oral stimulus of a vagina by a male is called as cunnilingus. And female giving oral stimulus to a male is called as fellatio. This is called as what, sir? Fellatio. Everything is crystal and clear in front of you, my dear friends. Now coming, bestiality. Having sex with animal is called as bestiality. Now the next chapter is called as what, sir? Perversions. Okay? Next chapter is called as perversion, and number one perversion is sadism. What is sadism? Person enjoy giving pain. Like NB people love to give pain to the FMGs. NB people को मजा आता है FMG को pain देने में. ठीक है? Like this you can see. The female is giving pain to a male. Their favorite hobby to do in their life. Females loves to give pain to the males. You can see this is called as sadism. Second is what's a masochism. Like FMG students love to take pain. Hit me harder. Person enjoys suffering from pain. You can see here. Now she's ready to take pain because pain gives her pleasure. Pain gives her pleasure, my dear friend. This is called as what, sir? This is called as masochist. Hit me harder, baby. Hit me harder, baby. Hit me harder, baby. This is called as masochist, my dear friend. This is called as what, sir? Masochist. Now frotteurism. R for rhythm, R for rubbing. Rubbing the private part of female in the public place is called as frotteurism. Next is fetish. Person enjoy with the object related to female, their clothes, etc. They love to hold them, they love to smell them, etc. Transvestism. Person enjoy wearing opposite sex clothes. For example, Ranveer Singh. Ranveer Singh loves to wear Deepika Padukone's clothes, and Deepika Padukone loves to wear Ranveer Singh's clothes. Now there is a very beautiful exhibition right here, sir. Person enjoy by showing his private acts in the public, parts in the public. ये है बुल्ला. बुल्ला रखता है सारी चीजें खुला खुला. अगर बुल्ला ने फ्लैश मार दी, एकदम से दिखा दिया तो, हाँ कुमारी तन्नू आई है देखो. अगर बुल्ला ने, देखो यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है, फ्लैशिंग. अगर पर्सन सडनली शोज द जेनेटिलिया, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैशिंग. एकदम से जेनेटिलिया निकाल दिया, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैशिंग. और अगर ग्लूटियल रीजन दिखाए तो ग्लूटियल रीजन इज कॉल्ड एज मूनिंग, माय डियर फ्रेंड्स. अगर किसी ने अपने ग्लूटियल रीजन दिखाए तो इसीलिए कहते हैं तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला. तो वो चांद है ना. और फिर क्या बोलता है, चांद से महबूबा हो मेरी और ऐसा मैंने सोचा क्या, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था. और अगर नग्न होके कोई भागने लग जाए, इसको बोलते हैं स्ट्रीकिंग. डन डना डन डना डन डना डन. फिर आया वॉयरिज्म, स्कॉटोफिलिया, पीपिंग टॉम. सर किसी को बिना इजाजत कपड़े बदलते हुए देखना, नहाते हुए देखना, अश्लील हरकतें करते हुए देखना, आपस में सेक्स करते हुए देखना, ये गलत बात है. जैसे कि इस एग्जाम्पल देखो, दिस इज कॉल्ड एज वॉयरिज्म. अगर आप चाबी में ऐसे घुस करके देखते हो तो ये गलत है, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी. दिस इज पनिशेबल अंडर 354C. दिस इज व्हाट सर, cognizable offense. Arrest without warrant is there. Necrophilia, person enjoy eating dead body, having sex with dead body. And necrophagia, person enjoy eating dead body, my dear friends. Copro means crop, और crops में क्या होता है? Copro means क्या होता है? Crops, और crops में क्या होता है सर? Feces. Person enjoy by having the smell of the feces, my dear friends. निर्मला जी कहती है आपकी आवाज कैसी है? मनोज तिवारी जैसी. पर मैं मनोज तिवारी नहीं हूं, मैं डॉक्टर पारस सिंह जम्वाल हूं. ठीक है. निर्मला जी कितनी निर्मल बातें करती है. तुम कितनी निर्मल हो, तुम कितनी भोली हो, निर्मल निर्मल हो, ओ निर्मल, ओ निर्मल. ठीक है. चलो क्लियर का फंडा. नाउ सर यूरोफिलिया इज व्हाट सर? यूरिन. यूरोफिलिया इज व्हाट सर? यूरिन. इनको पेशाब देख करके मजा आता है.
मास्टरबेशन जो आपने कभी नहीं की होगी, ना सुनी होगी, कभी भी जीवन में नहीं, पर गाइस रिमेंबर पर्सन एंजॉय शेकिंग और shaking his penis. Person enjoys shaking his penis is called as what, sir? Masturbation. The indoor yoga, outdoor yoga, anywhere you can perform. But if you perform publicly, then you are punishable under IPC 294. But if you are doing inside a room, then it is fully allowed, my dear friends. आपको कोई भी रोकेगा नहीं, ठीक है? Now, बॉबिट सिंड्रोम, भाभी जी ने भैया जी का बॉबी काट दिया। कैसे काटा? टीथ से। द भाभी जी इज कटिंग द बॉबी, भाभी जी ने भैया जी का गोभी काट दिया। दिस इज कॉल्ड एज बॉबिट सिंड्रोम। मेल जेनिटली इज एम्पुटेटेड बाय फीमेल। स्कैटोलॉजी और मोबाइल सेक्स, देखो सर फोन के ऊपर क्या होता है, ऐसे फोन मिला लिया जाता है, उसके बाद बेबी गरम गरम बातें करो, गरम गरम बातें करते। अब कोई सीधा साधा आदमी था, उसने क्या लिया, गरम पानी किया, फोन के ऊपर डाल दिया, लो जी सारा गरम गरम, और फिर उसके बाद गरम गरम बोले। या तो कोई ना ब्लोअर के सामने, ब्लोअर चल रहा था उसके सामने, हाँ जी हेलो अब आवाज गरम आ रही है। So guys remember, this is scatologia, mobile sex. It can be on a call or it can be on a video call, my dear friends, and my people knows well what I am talking about. So this is all about the sexual perversion. Now it's time to ask the question. Sir, suffering pain is called as, sir, suffering pain is called as, wow, suffering pain is called as, suffering pain is called as what, sir? Suffering pain is called as what? चलो जल्दी से बताओ सर। Suffering pain is called as, आंसर दो। खो गए तुम कहाँ, सपनों का ये जहां, ला 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 ला। निधि समझ गए, सैडिज्म। सर गिविंग पेन इज कॉल्ड एस, गिविंग पेन इज कॉल्ड एस, वाओ माय फ्रेंड्स आर देयर, गिविंग पेन इज कॉल्ड एस व्हाट? वाह शाबाश शाबाश मेरे शेर। गिविंग पेन इज कॉल्ड एस, वेरी गुड। गिविंग पेन इज कॉल्ड एस, दर्द देने को क्या बोलते हैं सर? ये पीडीएफ मुझे भी चाहिए बेटा, सबको चाहिए ये पीडीएफ, गलत काम करोगे देखने के बाद। तभी मैंने किसी को नहीं दी ये वाली सीक्रेट पीडीएफ, ठीक है? वेरी गुड गाइज। एंड फीमेल गिविंग प्लेजर टू मेल, फीमेल गिविंग प्लेजर टू मेल, फीमेल गिविंग प्लेजर टू मेल, मोबाइल सेक्स इज कॉल्ड एज, आंसर कर दो, शाबाश मेरे प्यारे। सुनो मेरे वीरो आज मेरी कहानी। चलो भाई अटेंडेंस लगाओ मारी स्टेट यूनिवर्सिटी वाले फटाफट। ये जो नाम बोल बोल के चले जाते हो ना, तुम बड़े चालाक बन रहे थे, आज मैं दिखाऊं तुम्हें। चलो मारी स्टेट यूनिवर्सिटी वाले अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे चैट बॉक्स के अंदर। चैप्टर नंबर 8 मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एमसीआई का पहले एक्ट हुआ करता था 1956 का। शेड्यूल 1 आईएमजीज के लिए, शेड्यूल 2 एफएमजीज के लिए, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए हुआ करता था। सर मेडिकल एथिक्स की कहते हैं कि डॉक्टर के अच्छे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अभिषेक ही है अकेला, मिर्जा गालिब हमारे साथ, ठीक है सर? अभिषेक अभिषेक अभिषेक। चलो सर डॉक्टर पेशेंट रिलेशन, मेडिकल एथिक्स कहते हैं डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए अच्छा। बिल्कुल सिरोही भी है, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर का सोसाइटी के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये 3 रिलेशन है, डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर सोसाइटी। नाउ वायलेशन ऑफ मेडिकल एथिक्स इज पनिशेबल। सबसे पहले स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास जाएगा आपका केस। सिंपल केस होगा तो ओनली वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा, पर सीवियर होगा तो बजा दिया जाओगे सर। देयर विल बी ए penal erasure. Penal erasure is what, sir? That doesn't mean your penal erasure will be there. Guys remember, penal erasure means cutting off name from the medical register. 2 type of penal erasure is there. One is temporary for 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, ठीक है? And next thing is something which is related to the permanent. Permanent is also called as professional death sentence, which is again confirmed by NMC. MCI तो अब रही नहीं, महाक्यूट, अब NMC है, ठीक है? नहीं महाक्यूट, ठीक है? चलो पर्सन कैन अप्लाई टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, माय डियर फ्रेंड्स। अगर यहां से काम नहीं बनता तो हेल्थ मिनिस्टर के पास से सिफारिश करा सकते हो। क्लियर हो गया? नाउ कंसेंट एग्रीमेंट और परमिशन के टाइप क्या क्या होते हैं? एक्सप्रेस कंसेंट कैसा होता है, पहले ओरली बताओ कि आज रात को हम बैठने वाले साथ में, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, फिर लिखित में ले लो। सो दिस इज व्हाट सर एक्सप्रेस कंसेंट। पहले अपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया
कि आज रात को हम बैठने वाले साथ में, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, क्या आप एग्री हैं? तो उन्होंने बोला हाँ चलो लिख के दे दो। उसके बाद कुछ भी होता है तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं है आपकी, ठीक है, क्लियर हो गया ना। हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, गुड एग्जांपल भी ले लेते हैं गाइस। इन अ हॉस्पिटल इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, first you'll explain to your patient that you are going to do this procedure, so there might can be a complication, but this procedure is highly necessary for the patient. Are you allowing me? He will say yes or she will say yes. Then you will take everything in a written. So this is called as express content or consent, oral or written, oral and written. Implied consent, consent given as a mean of gesture. अभी आप हॉस्पिटल में जा रहे हो ग्लूटियल रीजन पे इंजेक्शन के लिए, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिमूव द क्लोथ्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। So this is called as implied consent, consent given as a mean of gesture. If a female is going for pervaginal examination to a male gynecologist, that means you have to remove the clothes. This is called as something called as what's a mean of gesture. Blanket or open consent is no more followed in India, but you should know what it is. Earlier time, what was happening for the one single procedure, they were taking consent for all of the procedures. So they were most of the chances they were removing some organs, some organ trafficking was happening. That is why now it is illegal in India. The best consent is what's an express consent, that is written and in form. पहले मुंह से बताना है फिर लिख के ले लेना. Consent is not needed in case of emergency and unexpected emergency during the surgery. So these are the two scenarios where your consent is not at all required, my dear friends. Again, who can give the consent? Minimum age is 12 years for the consent of a physical examination, but for any kind of major procedure your age should be 18 years. Again, a previous year question of the FMGE exam. Medical negligence is the next topic, my dear friends. If we talk about the medical negligence, 304A, A for apron. If any kind of mishappening is happening because of a doctor's mistake, that is coming under medical negligence, and doctor is punishable under 304A. First type of negligence is called civil negligence. Simple mistakes result in a damage. For example, wrong prescription. Then punishment is money for compensation, and burden as proof is on a patient. As a patient, you have to keep the prescription slip where your doctor has written the wrong prescription. You just cannot claim anything just on a blind note. You need that consent form ready with you. Second thing is criminal negligence. Gross mistakes result in gross damage. For example, wrong surgery on a wrong patient, wrong limb amputated. You're making surgery and something is retained inside. The foreign bodies are retained inside the organs. Those are something called as blunders, and those are coming under criminal negligence, my dear friends. Now the burden of proof is on doctor, but it is not at all easy to say what you have done, guys, because the things or fact they speaks for themselves. This is called as novus actus intervenius, my dear friends. When the things or fact they speak for themselves. So what examples we are taking right here, sir? Doing wrong surgery, doing surgery on a wrong patient. Other than that, res is palliator is there. The things are sorry. So now not novus actus intervenius, my dear friends. Sorry for the words. It is res is palliator. The things or fact they speaks for themselves. Example is retained foreign body in the cavity. Punishment is there plus fine is there. What is novus actus intervenius? Prove the medical. To prove the medical negligence is called as novus actus intervenius, my dear friends. Now coming to the next thing is contributory negligence. Now doctor and patient, they both are responsible. Now treatment not taken, advice not followed. The contribution depends on the punishment depends on the contribution. How much who is contributing? And punishment depends on the contribution. Burden of proof lies on the doctor. Only one situation is there, that is a civil case where the burden of proof lies on the patient. Rest everywhere the burden of proof lies on the doctor itself, my dear friends. Now we coming to the next, res indicata. What is res indicata? Case should be filed within 2 years. ऐसा नहीं है कि आज कुछ हुआ और 20 साल बाद उठ के आगे केस करने के लिए. If anything happens in a medical negligence, the case should be filed within 2 years, my dear friends. The time limit to file the case is 2 years only. Now, vicarious liability, superior respondent means anything you are doing, who will be responsible? Your senior will be responsible. This is called as vicarious responsibility. So 8th chapter is also done. चलो भाई मारी वाले अटेंडेंस लगाओ दोबारा से. मारी वाला कौन कौन रह गया है? साहब ऐसे आ रहे हैं बस. हाँ मैं मारी से. चलो अब मेरी बारी, बताओ जल्दी से कौन कौन है. एक ही रह गया होगा मुझे पता.
बाकी सब झूठ बोल बोल के निकल गए यहाँ से। चलो guys, let's talk about impotency, abortion and the virginity. If we talk about the impotency, abortion and virginity, what is impotency? Inability of a person to achieve or maintain the penile erection. Doing. Inability of a person to achieve or maintain the penile erection. Doing. Abhishek Kaushal is the only person. Most common cause is psychological. Like the exam is coming and there is stress everywhere. Sirohi and Abhishek both are there from the Mari. Rest everyone left. Sir, inability of person to achieve or maintain the erection is called as what's an impotency, and the most common cause of impotency is psychological followed by vasculogenic. ठीक है सर, दिमाग खराब हो तो माहौल नहीं बन पाता चाहे कुछ भी कर लो. The number one type of impotency is kuwad. Kuwad is like a kabad. Guys, impotency towards a particular woman. Kuwad is like a kabad. मतलब दुनिया जहान में जाते हैं मजा आता है, पर अपनी वाली के साथ मजा नहीं है, क्यों? अपनी वाली क्या बन चुकी? कबाड़ बन चुकी है. तो कुआड, impotency towards a particular woman is there. क्लियर हो गया फंडा? ठीक है. बाकी सारे जूनियर हैं सर, ये सब में मजा आ रहा है. हाँ, इन सब में तो मजा आएगा ही तुम्हें. गंदी बातों में तो मजा आता ही है कि नहीं? फ्रिजिडिटी, अब फीमेल बन गई फ्रिज. अब तुमने बहुत कोशिश करी, 4 प्ले किया, ये किया, वो किया, 6 प्ले 9 प्ले 10 प्ले सब कर लिया, गर्मी पैदा नहीं हो रही. तुम जज साहब के पास जा सकते हो डिवोर्स मांगने के लिए. जज साहब पूछेंगे भैया क्या हुआ? कि डॉक्टर साहब अब मेरी फीमेल फ्रिज बन चुकी है, गर्मी पैदा नहीं हो रही. स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर डिवोर्स. Sterility, inability to produce children, my dear friend, they can be seen in both male and female. In today only gynecology we have learned this thing. Now virginity, you all people are virgin. Some are virgin by mind and some are virgin by body, but everyone is virgin, my dear friends. Most common type of vagina is same as the shape of moon, semilunar or crescenting. What is defloration? Defloration is loss of virginity. What is false virgin? Intact hymen after intercourse. माहौल बनने के बाद भी हाइमन वैसा का वैसा साफ सुथरा चमकीला खड़ा हुआ है. क्यों? या तो माहौल प्रॉपरली नहीं बना, अंदर तक जो है मशीनें नहीं गई हैं, या तो वो इतना ज्यादा हाइपर प्लास्टिक था कि वो अंदर जाके अपनी जगह टिका रहा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट्स अ फॉल्स वर्जिन. Site of rupture due to penetration, it is posterolateral, and due to masturbation this is always anterior, my dear friends. Dun dana dun dana dun dana dun. What is superfecundation? If two ovas are fertilized in same ovulatory cycle by the separate act of coitus. पहले एक भैया जी आए, उन्होंने माहौल बनाया, फिर दूसरे भैया जी आए, फिर उन्होंने माहौल बना दिया. एक भैया के बाद दूसरे भैया जी आके माहौल बना के चले गए, दो बच्चे पैदा हुए, एक सीधे वाल वाला, दूसरा घुंघराले वाल वाला. दोस्तों ध्यान रखना, one ova fertilized in same ovulatory cycle by two separate act of coitus, this is called as superfecundation. Superfetation, two ova fertilized in two ovulatory cycles. So if two ovas fertilized in two different ovulatory cycles, this is called as superfetation, which is very rare. Single ovulatory cycle, two separate act of coitus, that is called as superfecundation. Legitimate child, अगर लीगल मैरिज में कोई भी बच्चा पैदा होता है, दिस इज कॉल्ड एज लेजिटिमेट चाइल्ड. और अगर कोई फीमेल आपके साथ धोखा करती है पैसे कमाने के लिए, आपको झूठी मूठी प्रेगनेंसी का नाटक करती है, दैट इज कॉल्ड एज सपोजिशियस चाइल्ड और फिक्शियस चाइल्ड. What is posthumous child? Child born after the death of father. This is previous year question of the exam. MTP Act 2021. What are the indication? Therapeutic, eugenic, humanitarian and socio-economic. Therapeutic risk of physical mental injury is there. ठीक है, चलो. Then eugenic exposure to X-ray, teratogenic drugs are the humanitarian, rape, socio-economic, failure of contraception. सर अगर failure of contraception होता है तो abortion is only allowed till 20 weeks. After that abortion is not allowed. When 0 to 20, 1 doctor, 21 to 22, 2 doctor or 24 only can be done in the emergency, like any kind of neural tube defect, etc., etc., and it should be reviewed by the medical board. It should be reviewed by the medical board. Who can do degree diploma in the OBG? Yes. 1 year experience in OBG department? Yes. At least done 25 cases of MTP. Now coming to the chapter number 10, my dear friends. The last chapter which we are going to do, we are going to complete in next 15 to 20 minutes, my dear friends. Toxicology. So guys, you can see this image. Can you just let me know who is more poisonous?
Let me see how many people can guess it right. Who is more poisonous, my dear friends? Just answer it and let me see how many people are there with the conscious minds. Chalo yaar. So, guys, remember every boy who is saying all this thing A, let me tell you, the answer is B, my dear friends. ठीक है, ऐसा मैं नहीं, समाज कहता है, मैं समाज के खिलाफ हूँ. चलो ठीक है, तो फिर आंसर क्या होगा सोच लेना. Toxicology is the study of poison, my dear friends. What is toxicology? The study of poison is called as toxicology. Who is the father? Father is Matthew Orifla. Now, guys, who is more dangerous? Common crate is more dangerous than the cobra. Okay? But who is more fatal than cobra is more fatal than the common crate. Okay? Now, guys, they both are secreting neurotoxin and patient might can go into coma. Treatment is neostigmin. Neostigmin क्या करेगा सर? Anticholinergic जो है effect produce करेगा. Plus anti-snake venom we can give. Viper is triangular shape. Vasculotoxic is there. Triangular head is there. Then Russell Viper, saw scale Viper, two things are there, sir. Sea snake, my dear friends, this is myotoxic. Remember, sea snake is myotoxic. So these are the type of snakes you have to study. Now we talk about most common cause of death in the snake bite is due to fear due to bite. But treatment is reassure, immobilize. We never should actually tie the tourniquet. टॉर्निकेट नहीं टाई करना चाहिए, ऐसा किताब कहती है. ठीक है, नहीं करना चाहिए. Go to hospital and then start the treatment. What is right? Reassurance, immobilization, go to hospital and then start the treatment. Very simple. Now, anti-snake venom किस किस में देना है सर? Cobra and common crate, they both are neurotoxins. Yes. Russell and saw scale viper, they are the vasculotoxics. So in short, in neurotoxic and the viper vasculotoxic snakes, you have to give the anti-snake venom. What you have to give, sir? Anti-snake venom. नाउ सर, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में कैसे पता चलेगा? अगर इसके दो दो फैंग्स होंगे तो गाइस रिमेंबर ये मुंह से, और अगर दो दो पंचर मार्क होंगे तो ये क्या होगा? पॉइजनस. अगर मल्टीपल टीथ मार्क्स आर देयर देन इट इज नॉन पॉइजनस. प्लांट टॉक्सिन. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लांट टॉक्सिन? आरबीसीज को इकट्ठा करते हैं, एग्लूटिनेट कर देते हैं, पर्सन मर जाता है. व्हाट टाइप ऑफ प्लांट टॉक्सिन्स वी आर हैविंग? तो नंबर 1 इज स्ट्रिचनिन. स्ट्रिचनिन इज आल्सो कॉल्ड एज नक्स वोमिका. Colchicine भी बोलते हैं guys. Strychnine mimics the tetanus and tetanus is a 8th day disease. Cause of death in tetanus is ophiotonous position, respiratory muscle paralysis, etc. We are going to talk in detail also. Strychnine is fatal dose 1, Jimal, Gota, Nepala is 4, Castor or Arendi is 10 and Datura is 100. Strychnine 1, Jimal, Gota, Nepala 4, Castor, Arendi 10, Datura 100. Now, strychnine fatal dose is 1. It will mimic the tetanus and tetanus is the 8th day disease. In tetanus, drumstick bodies are seen, my dear friends. ठीक है? चलो, clear हो गया? Now, most common position is ophiotonous position, that is hyperextension of the back. Cause of death is respiratory muscle paralysis. Previous year question of the FMGE exam and the antidote is diazepam. डायज़ेपाम ये सब रिलैक्स करता है. हाइपर एक्सटेंशन के मसल्स को, जो मसल जो है स्टिफ हो चुके हैं, इसको रिलैक्स करेगा सर. एंड इट विल डू द रिवर्सल. इट विल बी द रिवर्सल एजेंट हियर. Datura is the 9D poison. What is never included in the 9Ds? That diarrhea is never included. Previous year question. Datura is the most common railroad side poison. Guys, initial time we were using Datura to make someone sleepy, and the moment that someone was sleepy, we used to rob them. So Datura is of different type. One is Datura alba. Datura alba is a white color Datura. Datura nigra, that means black color Datura. Datura stramonium, that is thorn apple जो शिवजी भगवान के चढ़ा जाता है.
Again, I would love to. Yes, Datura alba, white Datura nigra is the black Datura. Datura stramonium is thorn apple, my dear friends. Antidote is physostigmine. Physostigmine क्या करता है? Acetylcholine esterase को block करेगा. Moment acetylcholine esterase is blocked, my dear friends, the acetylcholine levels are high. Acetylcholine levels are high, my dear friends. Remember, if acetylcholine levels are high, parasympathetic features would be increased. Now, rye is ergoid. Inflammation of palm and sole is there. Tactile hallucination means the person will feel like insects are running onto the body, but actually there is no insect. Can you just let me know? Tactile hallucination is also seen where? Just think and answer me. Tactile hallucination आपको और कहाँ पे देखने मिलेगा सर? आंसर देना सर, बहुत आराम से याद आएगा. चिली सीड्स के अंदर डर्मेटाइटिस, गाइस रिमेंबर हुनार हैंड अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. कमिंग टू हेयर कॉल्ड एज कैनाबिस सटाइवा. कैनाबिस क्या करता है? सीएनएस को स्टिमुलेट करता है और इसका एक्टिव है टेट्रा THC, tetrahydrocannabinol is a previous year question of the FMGE exam. So tetrahydrocannabinol is a previous year question. Cocaine is the correct answer, my dear friends. Very good. Now the products are marijuana. Marijuana किसी भी पार्ट से बन जाता है. भांग ड्राइड लीव्स या स्टेम से बनता है. बर्न्ड रोप लाइक स्मेल होता है. गांजा सूखी फीमेल पत्तियों से बनता है और इसके अंदर एक सिम्टम होता है रन अमोक. रन अमोक इज अ काइंड ऑफ एमोटिवेशनल सिंड्रोम जिसके अंदर पर्सन विल फील लाइक किलिंग और डाइंग. ठीक है, या तो वो मारेगा या मरने का मन करता है. Now coming to the next is called as opium. Opium is also called as hafeem. Hafeem is developed from Papaver somniferum. Papaver somniferum antidote, guys. Remember in the pharma also we have read naltrexone is trachea, near trachea esophagus is there. Oral route is trexone and IV route is naloxone, my dear. Now hafeem is of two type, opiate and opiates. Opiate का morphine and cocaine है. Morphine is also used as a painkiller and heroin is also called as smack or brown sugar, my dear friends. Now coming to the cocaine, cocaine is also called as white lady. It is obtained from coca leaves, my dear friends. Sign and symptoms are the magnum symptoms and it is taken as what's a smoking, snorting, etc. It is also called as chasing the dragon. Sir, नाम है कोकीन, व्हाइट लेडी, काम सारे काले काले, काले दांत काली जीभ. एंटीडोट है, व्हाइट लेडी से कम मिलोगे सर, रात को मिलोगे आम मिल नाइट में. आम मिल नाइट्रेट इज अ एंटीडोट, माय डियर फ्रेंड्स. नाउ कमिंग टू द स्पीड बॉल. अगर आप हीरोइन के साथ कोकीन को मिक्स कर दोगे तो दिस विल बी योर स्पीड बॉल. सारी चीज स्टिमुलेट कर देगी, हाइपर स्टिमुलेट कर देगी. मोस्ट कॉमन सब्सटेंस अब्यूज इन इंडिया वुड बी टोबैको एंड यूज इन इंडिया इज कैफीन. अब्यूज क्या होता है इंडिया के अंदर? तंबाकू. और सब्सटेंस यूज इन इंडिया इज कैफीन. Now carbon monoxide poisoning, if I ask you if the person is dying because of carbon monoxide poisoning, what magnum symptom, what is magnum symptom? Magnum symptom is all about that tactile hallucination is there. Carbon monoxide poisoning, which color you are going to see in the Livor mortis, sir? Can you just answer me? Livor mortis में आपको कौन सा कलर देखने मिलेगा सर? जल्दी से जवाब देंगे. Livor mortis में आपको कौन सा वाला कलर देखने मिलेगा? Livor mortis के अंदर which color you are going to see, my dear friends? Livor mortis, which color you are going to see, my dear friends? Pink color. Sorry. Carbon monoxide. Mona loves cherry. That is why. Remember, your answer is what, sir? Cherry red color. Cherry red color. Shabash mere bachche. Now, ideal homicide poison, if we talk about, is thallium. Suicide is cyanide. Very good. Arsenic will mimic the cholera. And mnemonic is सागर. सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है. तो सब एंडोकार्डियल हेमोरेज. Yes. Eldritch me line, white line on the nails. Yes. Golden hair is there. Yes. और सफेद होता है लहसुन, गार्लिक की स्मेल. और क्या होता है? बाल. एंटीडोट क्या है? बाल. Plus red velvety mucosa plus disease which is associated with arsenic would be what's a black foot disease. Dun. Cyanide is also called as prussic acid. Ideal poison for the suicide. Bitter almond जैसी बदबू होती है और इसका भी एंटीडोट क्या है? आमिल नाइट्रेट प्लस विटामिन B12. ठीक है सर?
चलो क्लियर हो गया। डॉक्टर कविता, क्या बात है। ऐसी उलझी नजर तुमसे हटती नहीं। मोस्ट कॉमन पॉइजन यूज इन द सुसाइड इन इंडिया इज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में भी क्या क्या ना सर, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड एल्कलाइन फॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है उसके बाद एल्कलाइन फॉस्फेट जिसको बोलते हैं सल्फॉस। सल्फॉस इंडिया में कॉमनली, ठीक है ठीक है। चलो now sir, organophosphate mechanoaction, it is inhibiting acetylcholine esterase। again organophosphate poisoning में कौन से सिम्टम बढ़ेंगे, पैरासिम्पैथेटिक वाले। पैरासिम्पैथेटिक में अंदर पेट के ऊपर सारी चीजें कम हो जाती, तो मियोसिस देखने मिलेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने मिलेगी, नीचे जीआईटी की मूवमेंट बढ़ जाएगी तो नीचे डायरिया देखने मिलेगा सर। पिन पॉइंट पुपिल है, डायरिया है, ये सारे फीचर क्या है, पैरासिम्पैथेटिक के हैं। किसके हैं सर, पैरासिम्पैथेटिक। नाउ इफेक्ट इज पैरा। नाउ ट्रीटमेंट में क्या है, अट्रोपिन प्लस ऑक्सिन। ऑक्सिन क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये मस्करेनिक रिसेप्टर, जो मसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये उनमें एक्ट करता है, मसल्स वाले रिसेप्टर पे, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो सॉरी मसल्स के ऊपर। पॉइजनिंग का अगर केस आएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। गैस्ट्रिक लवाज विद द हेल्प ऑफ इवाल ट्यूब। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेटिव सर, corrosive या फिर कैरोसिन पॉइजनिंग वी कांट डू। Activated charcoal we can use as a physical antidote. Metal chelating agent like iron toxicity का antidote क्या है सर, desferoxamine. This is again a previous year question of the FMG exam. Penicillamine sir, pencil is copy pencil, तो antidote for copper poisoning and contraindicated in arsenic. Arsenic का antidote क्या होता है, just let me know. What is the antidote of arsenic my dear friends? Arsenic का antidote क्या है, अभी अभी पढ़ा था हमने। What is the antidote for the arsenic my dear friends? What is the antidote for arsenic? आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है, आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है सर, जल्दी बताओ, आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है। निधि वेरी गुड, इट इज बाल, BAL। बाल बाल दिन ये आए, बाल बाल दिन ये लाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीवन। चल, EDT, लेड पॉइजनिंग, कॉन्ट्रा मर्करी। गाइज हीमोडायलिसिस भी करना है, बट हीमोडायलिसिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन KBC हीरोइन। K से kerosene, benzodiazepine, copper sulfate and heroin. Kerosene, benzodiazepine, copper sulfate and heroin, my dear friends. So these are contraindicated here. Now coming to the phosphorus. Guys, phosphorus is a PYQ. Phosphorus is of two types. One is white phosphorus, another is red phosphorus. White is Diwali poison. White वाला टॉक्सिक होता है, white वाला लसन जैसा होता है, गार्लिक की स्मेल है। रेड वाला मैच बॉक्स के साइड पे पाया जाता है, नॉन टॉक्सिक होता है। ट्रीटमेंट कॉपर सल्फेट प्लस विटामिन की, सिंपल एज। कॉपर सल्फेट का पॉइजनिंग होगा सर अगर, ऑसीजोर हैंड ट्रिमर, दो फीचर्स के याद रखना, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मरकरी मिनीमाटा डिजीज ऑफ जापान, मर्क्यूरियल लेंटिस मतलब क्या है, अब मरकरी हमारी कहाँ जमा हो गई है, एंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस। अब मरकरी कहाँ जमा हो गई है, anterior capsule of the lens, my dear friends. Acrodynia, which is seen in the mercury, is pink disease. Hatter shake is there, that is glass blower shake would be there. Erythrism, person becomes shy and depressed. Antidote is again ball. So arsenic का भी एंटीडोट बाल था, मर्क्यूरी का भी एंटीडोट बाल है। अब आया लेड पॉइजनिंग। सर लेड पॉइजनिंग में प्लम्बिज्म देखने मिल रहा है, Bertullian line on the gum. Bertullian line is there. Now basophilic stippling is there, blue line on the RBC. गम पे होगा तो Bertullian line, basophilic stippling RBC पे, constipation, wrist drop and foot drop. Sir, wrist drop is due to involvement of which nerve? Your answer is radial nerve. And foot drop is due to involvement of what, sir? Common peroneal nerve. Common peroneal nerve. Dandana, 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 dan. Antidote is EDT. Ethanol, driving limit is 30 only. Blood concentration and symptom, guys, 80 milligram percentage is nystagmus. 150 तक हो जाए तो मोटर इनकॉन्टिनेंस, और अगर 400 हो जाए तो कोमा या डेथ हो सकती है। टेस्ट के लिए क्या करोगे, ड्रंकोमीटर, क्रोमेटोग्राफी, विच इज मोस्ट कॉमन क्रोमेटोग्राफी, एंटीडोज फॉर्मिपिजोल।
सो सर अगर एथेनॉल का पॉइजनिंग होगा, एंटीडोट इज फॉर्मिपिजोल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर, मेथनॉल सारी चीजें, मिंथोल ठंडा ठंडा, कूल कूल, स्नो फील्ड विजन, तो ठंडी क्या है, स्नो, स्नो फील्ड विजन इज देयर एंड द एंटीडोट इज एथेनॉल। करोसिव की बात करते हैं, हु आर मोर डेंजरस, एसिड ज्यादा डेंजरस है कि एल्कलाई, सर एल्कलाइज आर मोर डेंजरस, एंड एल फॉर एल्कलाई, एल फॉर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, सी फॉर कोगुलेटिव नेक्रोसिस आर देयर। Oxalic acid is a ink remover and acetone is a nail paint remover. Antidote is calcium gluconate, wall scraping also. Patient might can give you a history. Coffee white vomit is there, wall scraping करता है, calcium gluconate का treatment चल रहा है, सोचो कौन सी वाली poisoning होगी सर, oxalic acid which is a ink remover, nothing else than that you have to think. हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब है सर ये, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ब्लैक कलर भिगोजा, जहां जहां जाएगा सब कुछ जला देगा, दांत सफेद हो जाएंगे, सारी गंदगी ऊपर से हट जाएगी, दांत सफेद हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें काली हो जाएगी। द ट्रीटमेंट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैंने बोला था पॉइजनिंग का केस आता है, जस्ट लेट मी नो विच कैविटी यू आर गोइंग टू ओपन एट फर्स्ट, सबसे पहली कैविटी आप कौन सी खोलने वाले हो, लेट मी नो सर, which is the first cavity you are going to open my dear friends। आपका आंसर आएगा तो ही मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैंने आज ही पढ़ाया आपको सर, आपको जवाब देना पड़ेगा और दिमाग में जवाब है, इसको बस अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी से ऊपर लेके आना है, कॉन्शियस मेमोरी के ऊपर। सबसे पहले पॉइजनिंग केस के अंदर किसको लाया जाता है, पॉइजनिंग के, यस बच्चे वेरी गुड, इट इज क्रेनियल कैविटी, शाबाश मेरे शेरों। क्रेनियल कैविटी से हमें पता चलता है कि बदबू कैसी है, तो गाइस हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर पॉइजनिंग होगा तो रॉटन एग जैसा, सड़े अंडे जैसा बदबू होगा, एथेनॉल का होगा तो फ्रूटी स्मेल होगा, नाइट्रोबेंजीन शू पॉलिश होगा, और हेमलॉक में कैसा होगा, कैरेट लाइक स्मेल इज देयर। अगेन आई वांट टू रिपीट, हाइड्रोजन सल्फाइड देयर विल बी अ रॉटन एग स्मेल, then ethanol there will be a fruity, nitrobenzene shoe polish, hemlock there will be carrot like smell would be there. So these are the some examples. Now drug smuggling is of two type, body packer and body stuffer my dear friends. If drug is packed in polythene or condom and person swallows it and it is following a normal route of GIT to come outside, person is swallowing it and coming from normal routine of the GIT, that is called as body packer. But stuffing is done somewhere where there is a cavity like anal cavity, vaginal cavity, thoracic cavity, peritoneal cavity. If a drug is packed in a condom or a polythene and it is stuffed inside a MCQ cavity, we call that as body stuffer syndrome. And guys, with this we have completed our forensic medicine in just 4 hours. In 4 hours, I can guarantee you at least 8 plus marks in FMT from the notes. Mind my words, on the 20th of January, you can remember this, and do follow me on my Instagram for any kind of queries, my dear friends. Love you all and see you all with flying colors. Thank you so much. Also, you can follow our page called as Meduhub FMGE. Meduhub FMGE. You can approach for any kind of help. So thank you so much. Love you all.